So do you have any question at the beginning so that I can respond to that? If you have some questions, please raise. Then I'll throw some light on that. Some students have raised hand. Rinki Sahu, Swarnalakshmi, Boite. So, okay. Let me go by your hand raising. So, Rinki Sahu, please tell me. तो हाथ उठेछ सब अजणातारे हाथ उठी ना पचारे हाथ उठी सर ऑडिबल होउथिला ना नाही पचारले तो सेति मु हैंड रेज करथिली अच्छा किसी कहार क्वेश्चन पचारिवार अछि किछि डाउट Yes, sir. Sir, can I? Yes, please. Sir, actually, I wanted to clarify that, about the exam cycle. If you could let us know about that, because I am hearing a lot of mixed reviews about that. I actually wanted to appear for this exam in December. Would that be feasible? Since I'm preparing for civil services, so due to prelims, I don't think it would be fair to prepare for my master's exam. Your question is quite relevant, but thing is, I am told to give some instructions regarding the syllabus. I don't have that timetable. You know, IGNOU Study Center contacted me that we need some of your classes regarding the syllabus. So, Sir, but generally, what is the time frame? I mean, when do? sorry, I don't have any information regarding that. You can contact to the study center. Uh, Alright. So for this class, please limit yourself to ask questions regarding the syllabus. If you have any doubt or something else, or you simply give some key points uh, for your course content. Tell me. Because in one 2 hour lecture, it is not difficult, not possible to complete consumer behavior. सर मोर गोटे क्वेश्चन अछि सो ए क्लास रे हमें क्लास डिस्कशन करिबा ना ओनली क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करियो स्टडी मटेरियल आगुरु मिलिछि स्टडी मटेरियल हां जे सर मिलिछि तार मिलछि हा पढिथिबा पढिला बेले किछि प्रॉब्लम फेस करथिबा सेटा ऊपर बेसिकली हमें कथा हो अदरवाइज व्हाट आई कैन डू मु यार जो मेन कंटेंट सब रहिछि ता विषय रे पदे पदे कथा कहि दिबी सो दैट पढिला बेले समझ हो सो यू शुड एडवाइस मी व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू जी सर पढ़ा है आगुरी किसी क्वेश्चन रही जाइए तो आई विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस फर्स्ट और जदि बिल्कुल पढ़ी ना किसी करना ताले मु किसी ब्रॉड बेसिक्स जोटा अच्छे से कह देबी सर टिके बेसिक रु स्टार्ट करले भलो हबो हमें बुझी पारिबो क्लियरली समस्त इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन ले पढ़ी छ ना हां सर सीधा सल्व केते जण इकोनॉमिक्स नै जदि सेमति के अछंती ताल टिके हाथ उठे दियंतु रिंकी तमे हैंड्स डाउन कर दियो आउ so लिप्सिता जियानी प्रधान सोनाली लक्ष्मीप्रिया ये समस्त कौन इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ुछ गीतांजलि इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम जे पढ़ुछ माने ग्रेजुएशन में पढ़ी ना हां सेमति सर एक्चुअली मोर मैथ ऑनर्स थिला प्लस 3 गीतांजलि शुभश्री सर फर्स्ट टाइम बोल यस सर और कहले जे केमिस्ट्री ऑनर्स थिला
Okay, so I should consider this class as an orientation class to microeconomic, especially consumer behavior. ठीक तो सही हिसाब रे किछि कथा कहबी बिगिनर को जहा कहा जाए. ओके, सो मझिरे मझिरे मते फीडबैक दे देबे. ओडिया रे कहबी ना इंग्लिश रे कहबी, which will be convenient. କରି କହିବେ ଟିକେ ଓଡିଆରେ ବି କହୁଥିବେ ଯେମିତି ଆମର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁଥିବୁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ କୁ ବି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ ନା ତ ସେ କହିଲେ ଭଲ ହବ। मिसे के कहबा. ओडिया विथ इंग्लिश। हां, मिसे के कहबा ठीक अछि. Okay, consumer behavior. Let us conceptualize ourselves or visualize ourselves as consumers. ଆମେ ସମସ୍ତେ consumer ଅଛନ୍ତି. कंज्यूमर मानकर रेकर्ड आम पाइपर कि रेकर्ड जब हो निश्चय पाइबा कथा कहीं पाइबानी किंतु टेक्निकल मेथड्स जहाँ सब अच्छी एग्जाम मेथड जहाँ सब अच्छी गुड़िक स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करेंगे. तो जो डिस्टेंस मोड सब इश्यू हुए मत केवल गोटे रिक्वेस्ट कले जे सर क्लास आम 5टी क्लास माइक्रो मुझे हाँ कहीदी आ बाकी अदर आस्पेक्ट पर I am not an employee of no, so I belong to a university. Okay, से बड़ा सेक्टर सबू बुझी नेबे. रश्मिता मुझे तमरी क्वेश्चन को रेस्पोंड करूची जे यार रिकॉर्डिंग तुम स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करिबो. सो ଆଜ୍ଞା कंज्यूमर ସାର୍ ଠିକ कौन. ଅଛି ସାର୍। हाँ, कंज्यूमर हम केवल पाठ पढ़ा कथा मु हेबे आ किछि कथा हेबिनी जो अदर एस्पेक्ट अछि से गुडी को तमे स्टडी सेंटर को बुझिबो. पावर पॉइंट ना पावर पॉइंट तो मुझे जो बही खंड को दिया जाए तुमको देखा जाउछि मु प्रेजेंट करूछि स्क्रीन ले देखा जाउछि. ओके, सो ये कंज्यूमर बिहेवियर जो मॉड्यूल अछि जो ब्लॉक से बेसिकली तीनोटी यूनिट अछि. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी रो डिमांड थ्योरी डिराइव करा जाउछि. तापरे डिमांड रे किछि रिसेंट डेवलपमेंट मध्य सिलेबस रे अछि. सो कंज्यूमर थ्योरी रे कोन कोन सब रही छी. सो लेट अस हैव ए लुक. दिस इज फर्स्ट यूनिट. एथरे रहला यूटिलिटी बोली गोटे कॉन्सेप्ट रहउछि. तेणु कंज्यूमर जेतेबेले कोनोसी चॉइस करंती से चॉइस आम समस्ते जो भी किसी ना किसी डिसीजन नियंती से डिसीजन समय आम कौन देखती ना आम आमर यूटिलिटी को जो माने उपयोगिता बोली ताको कहा जाउछि सेटा मैक्सिमम हो. आम समस्ते जड़े जड़े ऑप्टिमाइजिंग एजेंट कंज्यूमर जड़े कंज्यूमर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर सेवर इन्वेस्टर एक्सपोर्टर इंपोर्टर ये समस्त को इकोनॉमिक्स रे जड़े जड़े एजेंट बोली कहा जाए. ताहले प्रत्येक एजेंट जो बिजनेस करती जो काम रे थांती से काम रो मैक्सिमम बेनिफिट से माने एक्सट्रैक्ट करया पई चाहती. कंज्यूमर रो एक्टिविटी रो तार ऑब्जेक्टिव टा कोन आमे जेतबेले किसी खाऊचंती किसी पिंधुचंती जहाँ भी सब आम करते वी आर कंज्यूमिंग एज कंज्यूमर आम ऑब्जेक्टिव को ना आमको मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले. से सैटिस्फैक्शन शब्द को इकोनॉमिक्स रे यूटिलिटी बोली कहा जाउछि. यूटिलिटी. सो व्हेन वी कंज्यूम वी विल गेट यूटिलिटी. तेणु कंजम्पशन रो ऑब्जेक्टिव होछि टू गेट यूटिलिटी. तेणु जे पर्यंत कंज्यूमर यूटिलिटी अधिक पाई चलती से कंज्यूम कर जितेबले तार यूटिलिटी कमिबा आरंभ हो सी आउ कंजम्पशन करिवो नाही. कंजम्पशन रे कमे तेणु से पर्यंत कंज्यूम कर चलिबो जो पर्यंत तार यूटिलिटी बढ़ी बढ़ी चलती. आम जानिबा केमती बढ़िला कि नाही सेतिबे गोटे कॉन्सेप्ट अछि तार मार्जिनल यूटिलिटी. कौन मार्जिनल यूटिलिटी गोटे छोट एग्जांपल दो. सपोज 5टी रसगुल्ला खाइला परे
आमको जो satisfaction मिलेला satisfaction को तो नंबर रे एक्सप्रेस करी हुए नहीं हमें केते satisfaction पाइले हमें फील करी परिबा but can we give some quantitative figure to that? Not possible. Suppose for the sake of understanding हमें धरिबा जे पांचटी रसगुल्ला खाइला परे ताको 50 यूनिट यूटिलिटी मिलला आउ षष्ठ खाई सरला परे तर यूटिलिटी 50 रु बढ़ी के हे गला 55 ताले मोर प्रश्नटी हला षष्ठ रसगुल्ला रु केते एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलला एही जणे मते कहंतु षष्ठ रु केते मिलला पांचटा रसगुल्ला खाई कि 50 यूनिट मिलथिला छटा खाई सारी कि 55 यूटिलिटी मिलला ताहले षष्ठ रसगुल्ला रु केते मिलला एग्जैक्टली यस 5 से जो 5 एक्स्ट्रा units of satisfaction मिलला that is the marginal utility of the sixth unit of consumption से आउ गोटे जदि खाइले 7टा हे गला टोटल कंजम्पशन तो 7 हैला सपोज तकर टोटल satisfaction जाय के पहुंची गला 60 56 थिला 6टा खाया पर 56 थिला सप्तम रसगुल्ला पर पाइ गले 60 ताले क्वेश्चन होची जे सप्तम रु केते मिलला 56 रु 60 हे गला 4 यूनिट मिलला so that 4 is marginal utility so हमें भी बुझी जिबा जे marginal utility ता कोन जो लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन रु जेति की एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन मिलुची that is known as marginal utility so utility derived the extra utility derived from the last unit of consumption that is known as marginal utility ओ कहिते जे बिगिनिंग रु पाठ पढ़ा कथा जहा अछि सेति की पचारिबा सो मार्जिनल यूटिलिटी जे पर्यंत पॉजिटिव अछि त माने तर टोटल यूटिलिटी बढ़ी जाछि यदि तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हे गला केमति सपोज सप्तम यूनिट कंज्यूम कला परे मध्य 60 पाइथिला नाउ लेट्स से द कंज्यूमर कंज्यूम्स द नेक्स्ट यूनिट 8th यूनिट यूटिलिटी रिमेन्स एट 60 60 थिला वर्तमान भी से 60 रहला ताहले अष्टम यूनिट रु केते मिलला ना किछ एक्स्ट्रा मिलला नहीं 0 सो तापर जदि से 9th यूनिट कंज्यूम करिवो अष्टम यूनिट रु आउ एक्स्ट्रा मिलुने 9th यूनिट रु मिलबो कि 9th यूनिट रु कंज्यूम आउ ताको सैटिस्फैक्शन किछ मिलबो नाही बट that may give some dissatisfaction जेमति हमें टू मच ओवर ईटिंग जे तो हे जाउछ से समय कोन that may lead to some kind of indigestion or vomiting kind of thing negative हे छ बिल्कुल ठीक कथा शुक्रिया so I'm happy that you all are listening आ प्रश्न भी जा पछिरा कथा भी एक्चुअली सब लिखि पकोतबे बेले बेले अनम्यूट करि भी पछारि पाए किंतु पाठ कथा केवल हवा कोर्स तमर परीक्षा केबे हबो आ कोन मिलिबो कोन नै से विषय रे I am not the right person to tell you because I am not an insider here. Therefore, as long as marginal utility is positive, total utility will increase. If marginal utility is 0, total utility will reach its maximum. If marginal utility is negative, total utility will fall. So, एटा होची हमरो गोटे आमे गोटे थ्योरी बोली एको धरि परिबा सो कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यानी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर्यंत पड़े यदि मागना रे हमको किछि मिलता ताले हम पेट भर पेट रसगुल्ला खाइ दियंते 0 मार्जिनल यूटिलिटी पर्यंत हम कंज्यूम करते किंतु प्रकृत रे हम से पर्यंत कंज्यूम करि पारंती नाही हां काहे की करि पारंती नाही बिकॉज कौन सी जिनिस एमती बिना पैसा रे मिले नाही वी हैव टू पे फॉर दैट पे जितोले हम कंज्यूम करचंत वी आर गेटिंग सैटिस्फैक्शन वी बिकम हैप्पी बट व्हेन फॉर दैट यूनिट वी हैव टू पे समथिंग देन हमको टिके कष्ट हुए
पैसा जो पेमेंट करने पड़े आमको से कष्ट आरंभ हो जाए। ताहले वर्तमान होची आमे संतुष्टि केते पाइले आ कष्ट केते पाइले कंज्यूम कला बेले संतुष्टि पाइले जेतोल ता पय आमे पे करूछंती एट दैट टाइम वी आर गेटिंग dissatisfaction disutility or that is the cost of consumption whatever you call it, that is price of the commodity। ताहले डिसीजन केतोले हबो डिसीजन हवा पय होची कि एबे कंपैरिजन हमको करबा को पड़िबो मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस संगे। मार्जिनल यूटिलिटी बेनिफिट साइड देखौची प्राइस टा कॉस्ट साइड देखियो। धरि ने जाओ प्राइस टा समान कोन समान तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कला बेले तो 10 टका दबा को पड़ची, सेकंड यूनिट कंज्यूम कले तो 20 टका दबा को पड़िबो, थर्ड यूनिट ले तो 30 टका दबा को पड़िबो। You may ask a question, sir, when we buy more, we do some kind of bargaining also. कि हमें अधिक किणबो हमको टिके कंसेशन कर दियो दुकान को कहते हुए, but for the sake of simplicity, let us assume that that bargaining space is not there. Price is constant. Price is constant. Somebody has written here. That's correct. Price is constant. That is an assumption. That may not be a reality. That is an assumption. सेठी को हमें आमो इकोनॉमिक टर्म में एमती कहती let the consumer be a price taker। जो टेकर और मेकर ये जिनसे को बुझीबा दरकार जेतो हमें प्राइस नेगोशिएट करंती जो सेलर तक सहित आम नेगोशिएशन पर प्राइस किसी मॉडिफाई हुए वी आर ए प्राइस मेकर। आमे मध्य जड़े प्राइस मेकर कारण प्राइस को आमे इन्फ्लुएंस करते किंतु आमर जदि सेते सिग्निफिकेंस किछि नाही आमर सेलर कहबो बाय माने टेक इट और लीव इट नबार अछि जति नियो न छाड़ हां टेक इट और लीव इट त माने हमको आमे तापर कहउचंती माने वी आर सिंपली टेकर आमर सेति किछि नेगोशिएटिंग कैपेसिटी नाही। लेट आवर कंज्यूमर इज ए प्राइस टेकर दैट मींस she cannot negotiate the price with the seller। ताहले गोटा को 10 टंका हेले दीटा को 20 टंका दबो 5 टा किनले 50 टंका दबो 100 टा किनले 1000 टंका दबो पर यूनिट 10 टंका दबो पर यूनिट पेमेंट जोटा होची दैट इज प्राइस। सेटा को हमें कांस्टेंट बोली धरने तले मार्जिनल यूटिलिटी जति ताठारु अधिक हुए 10 टंका संतुष्ट माने से पेमेंट कला सैटिस्फैक्शन जोटा पाइबो से सैटिस्फैक्शन जदि 10 टंका रु अधिक हुए ताहले जाय कि से किनिबो ताहले से किनिबो नाही जदि कम हे गला किनिबो नाही। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ता तो टंका रे में मुझे जति कहली धर 50 पाइथिला 56 पाइला कोन 50 पाइथिला न 50 से एटी गोटे बड़ क्वेश्चन आसे can utility be assigned a number? No, it cannot। but जितने यूटिलिटी एनालिसिस बिगिन करागला अल्फ्रेड मार्शल ये थ्योरी देथिले से समय गोटे कष्ट पाइले से से गोटे कहले we know that utility is not cardinal, it cannot be measured in numbers, it cannot be quantified। however, for the sake of analysis, let us assume that it is quantifiable and say what artificial unit of measurement na pai pahile let it be util is a measure of utility। सेते को सीधा को बुझिबा पई 50 60 ए बळी सब नंबर गुडा को सब कहले हमें से मार्शलियन सेंस रे प्रथमे टिके बुझि जीवा सहज होए तो जति सीधा यूटिल एक्सप्रेस करू चंती टंका तो यूटिल दिए जाउ टंका दिए जाउ छी कोथरे ना रुपीस रे बा डॉलर रे तार यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो रुपी डॉलर रूबल येन वन जाबी सब ए गुडा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ताने कंपेयर केमती हो ना तापर मार्शल कहउचंती जे नाही तमे गोटे काम करो यूटिल को मोनेटाइज कर दियो। सपोज 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी तान जदि 50 यूटिलिटी से पाइछि ताले 50 टंका रे पाइला एको मध्य माने द होल आइडिया इज दैट कन्वर्ट the units of utility to monetary term तो monetize कर दबा
ताहले सी भी टंका हे गला जो सैटिस्फैक्शन पाइले पेमेंट भी जोटा है सी भी टंकार दिगला दीटा को हमें कंपेयर कर दबा सो दैट वी कॉल एज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस और ये प्राइस जो है ना सी भी रुपीस मेक ए कंपैरिजन as long as marginal utility in nominal term means in monetary term is higher than price of the commodity consumer will buy the commodity. Okay, buy more and more. When the opposite happens, marginal utility is less than the price of the commodity, then consumer will have a problem. Consumer will never consume that. Because ମୁଁ ପାଉଛି 5 ଟଙ୍କାର satisfaction 10 ଟଙ୍କା ଦେବି କାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ କେହି ଲସ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି କନଜ୍ୟୁମର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲସ୍ରେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମାନେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି ସେ ଭାବେ ହଁ ଏତିକି ହିଁ କିଣିବି ରସଗୋଲା 10ଟା ଖାଇଦେବି ଯେ ମାଗଣା କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇଲେ 2ଟା ଖାଇବି so that is the state which is known as equilibrium. So when will that equilibrium come? The equilibrium will be arrived when marginal utility in terms of money is exactly equal to price of the commodity. अधिक हेले किणी चलिबो कम हेले किणिबो नाही रिट्रैक्ट करिवो कमेइ दबो को जगह से स्टे पुट जोटा कहूंगी माने से स्थितावस्था रहबो आ आगु जीवन के पछुक आसीबो तो जगह एग्जैक्ट इक्वालिटी पड़ि आसीबो ये होची मार्शलियन अप्रोच एथिरो डिमांड लॉ भी डिराइव करा जायछि एथिरो बाकी तांकर जो डिमांड लॉ कहली बाकी डिमांड कर्व भी डिराइव करा जायछि सेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग केमति होबो से कथा भी कहा जायछि दैट इज मार्शलियन अप्रोच हाउएवर दैट अप्रोच हैज ए प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम ये जो assumption गुड़ा सब निया गला ये assumption गुड़ा सब वास्तव नहीं केमति को गला लेट द कंज्यूमर इज ए प्राइस मेकर ये गोटे कथा कंज्यूमर समटाइम्स इज प्राइस मेकर आउ एक कथा भी कहा गला कि यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर दिया जिवो लेट्स निजे कहउछन कि वी नो दैट इट इज नॉट क्वांटिफाइबल फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस अज्यूम दैट तो जो अज्यूम करके जो यूटिल कौन से ब्रह्मांड में किसी यूटिल बोली किसी यूनिट ही नहीं तो ए बड़ी वे रे ए बड़ी अजम्पशन को सब नेकी जो एक्सप्लेनेशन दिया गला ते एक्सप्लेनेशन ऊपर क्रिटिसिज्म परवर्ती समय रे डेवलप होला कि गोटे वास्तव गोटे प्रिमाइस ऊपर गोटे थ्योरी डेवलप करा होची सेति पनी लोगों को माने अर्थशास्त्री मानन को भितरे गोटे डिससैटिस्फैक्शन थिला कि देयर शुड बी सम अल्टरनेटिव अप्रोच to demand analysis. और भी गोटे केस रहिला जे जड़े आयरलैंड रे जड़े गिफेन बोली जड़े इकोनॉमिस्ट से शो करथले जे एमती गोटे कमोडिटी अछि से कमोडिटी रो प्राइस बढ़िले मार्शल तो कहउछ प्राइस बढ़िले डिमांड कमिबो एंड वाइस वर्सा that is known as law of demand other things remaining constant खाली प्राइस और क्वांटिटी डिमांड भीतर जदि हम लिंक देखिबा सो दिस इज द रिलेशनशिप व्हिच वी कॉल एज लॉ ऑफ डिमांड तो गिफेन से तो कहले किंतु मु तो एमती गोटे कमोडिटी देखुची आयरलैंड रे कि तार प्राइस तो बढ़ुची तार डिमांड कम बढ़ जाउची प्राइस कमिले ता डिमांड कमी जाउची तो ताको भी अन्य माने देखले कि हां से जहां कोजन ठीक कथा देन मार्शलियन लॉ ऑफ डिमांड was not in a situation to explain that paradox जो paradox को गिफेन paradox बोले कहा जाए तो सेट भी आउट डिससैटिस्फैक्शन बढ़ला कि लॉ केमति कहा जाय लॉ कोटा को कहा जाए इति ग्रेविटेशन लॉ कौन सी जिनिस को छाड़ देले से तळे पड़ जिवो काहे कि ना जो अर्थ रो ग्रेविटेशन फोर्स ताको टाणी आनिबो तार किछि एक्सेप्शन नाही जहार एक्सेप्शन हैला से लॉ केमति हो तो इसको डिमांड लॉ केमति कहा जिवो ये सब क्वेश्चन आसिला देन मार्शल का थ्योरी को ऊपर जो प्रश्न आसिला पुणी आपने परवर्ती एनालिसिस है जोटा कि ए सब्जेक्ट रो मुख्य पाठ है सेटा मार्शल मुख्य नोय मार्शल केवल गोटे बिंदु हिसाब रे कहली एटा को के जानि दबा दरकार
किंतु आमर मेन एनालिसिस टी होची हिग्स का एनालिसिस जॉन हिग्स जने नोबेल लॉरेट इकोनॉमिक्स रो तेणु जॉन हिग्स तांकर वैल्यू एंड कैपिटल बही 1936 रे आसला then John Hicks gave an entirely new approach to the demand theory से approach टा को कहा जाए ordinal approach तो आम ये देखुवा कि 1.3 रे consumer choice concerning utility first one is cardinal approach and introduction तापर ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଗୋଟେ introduction ହିସାବରେ ବୁଝି ନବା तापर एनालिसिस तो 1.3.2 एठी देखिबा से 1.3.2 रे ही सेठू सब ऑर्डिनल ऊपर बाकी सब 1.5 4 1.5 ये सब जो कांसेप्ट सब रहला से ऑर्डिनल एनालिसिस बेसिकली हिग्सियन एनालिसिस वर्तमान पर्यंत कहार जति किछि प्रश्न अछि पचार दियंतु आउ तापर आमे वर्तमान ऑर्डिनल एनालिसिस को पढेबा मु पचारला परे 15-20 सेकंड वेट करेंगे यदि कहार पचार तो पचार दे यदि कि न पचारे मु भाबी nobody has any question I proceed to the next content तो मोर टाइम चले जी ओके सो हिग्सियन एनालिसिस रे कौन कौन पाठ रहिला एटा थिला मार्शालियन ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दैट इज इन मॉनेटरी टर्म्स देन ये जो लाइन टी रही एटा होची प्राइस जेतु तक हमें कांस्टेंट बोली धरिले दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन जो जगह डेटा जेके मैच करा दिस मीटिंग पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट देन कंज्यूमर केते कंज्यूम करिवो ना से इक्विलिब्रियम रो हमें गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देली दिस इज x स्टार सो ओरिजिन यदि o हुए ताले o x स्टार से कंज्यूम करिवो केते प्राइस रे लेट दिस प्राइस इज p o p प्राइस रे o x स्टार से कंज्यूम करिवो दिस इज मार्शलियन थ्योरी देन ऑर्डिनल अप्रोच इकोनॉमिक्स को टिके मैथमेटिकली पढ़ले आरो भल लागे किंतु तमे गोटे क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट ग्रुप के केमिस्ट्री रो आछंती के मैथमेटिक्स रो आछंती के हिस्ट्री पढ़ी के आछते आ मैथमेटिक्स रो बैकग्राउंड कोन थिबो मु जानि नै किंतु ई मटेरियल में किछि किछि मैथमेटिक्स रा टच अछि ताकि यदि हमें बुझी कि से अनुसार पढ़िबा दैट विल हेल्प इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज some mathematical tools to explain economic theories. Having said that, let us come to this ordinal theory. A ordinal theory रे basically बीटा approach अछि. Substantively हमें हिग्स को पढ़िबा जॉन हिग्स के सहित आउ गोटे ना अछि स्लट्सकी तांकर भी कंट्रीब्यूशन अछि और भी केते जनकर अछि. So this school is entirely led by John Hicks. आउ परवर्ती समय से आउ किछि मॉडिफिकेशन आउ किछि इंप्रूवमेंट आउ किछि सरल भाव रे बुझिया पय प्रयास कले सामुएलसन का थ्योरी रो नाम होचे रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच तेनो ये ऑर्डिनल थ्योरी रे सिलेबस रे इंडिफरेंस कर्व से गोटे अप्रोच आ गोटे होचे रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच. So let us first understand indifferent curve approach. The indifferent curve approach रे हमें assumption किछि नबा दरकार नाही. जेमति मार्शलियन केस रे सब assumption थिला गुडी assumption थिला. Let the consumer is a price taker. Marginal utility of money remains constant. Utility is measurable. ये भले भाबरे सब consumer is rational is a assumption Marshall करथिला but in Hicksian analysis we don't have any assumption rather we have some sort of axioms. There is a difference between assumption and axiom. के कहबे मते assumption और axiom भितर कोन डिफरेंस मैथमेटिक्स रो स्टूडेंट कोन axiom कोन लॉजिक रो स्टूडेंट कोन assumption कोन यदि कहिथिबे Axioms are logically correct.
actually correct habo न habo se kotha ଆମେ କହିପାରିବାନି but logically they are correct. ଆମେ ସବୁବେଳେ logically behave କରନ୍ତି ନାହିଁ. Economics is not purely a logical science. Economics is actually a behavioral science. Behavior रे ଆମର behavior କେତେବେଳେ logical ହବ କେତେବେଳେ illogical ବି ହବ. ଯେମିତି ସିଗାରେଟ୍ ଲୋକ ପିଉଛି ଏଟା କଣ logically correct? ସେଥିରୁ satisfaction ମିଳେ ନା dissatisfaction ମିଳେ? ଯଦି dissatisfaction ମିଳେ ତାହେଲେ ଲୋକ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କରିବ କାହିଁକି? ସେ ୟୁଟିଲିଟି ପାଉଛି ବୋଲି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛି, ଯିଏ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛି ସେ ୟୁଟିଲିଟି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇ ୱେରେ ତାକୁ ବୁଝିବ। ଏଇଟା ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, ଠିକ ଅଛି ସେଟା କଥା, ବଟ୍ at the end of the day person is consuming that. So human behavior is not always logical. If axioms are logically correct statements, it is ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ assumption କୋଉଟା କହିଲେ କି consumer is a price taker. A consumer price taker ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଆମେ କେବଳ ନେଇଗଲେ assume କରିଦେଲେ, maybe may not, କିନ୍ତୁ axiom ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲଜିକ ନାହିଁ କି consumer price taker ନୁହେଁ, consumer can also be a price maker. ତ axiom କଣ? The axiom ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ Hicks analysis ପଢିଲେ axiom ପଢିବା. The first one is completeness. କଣ completeness? ମୁଁ ତାକୁ ସରଳରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପୋଜ କନଜ୍ୟୁମର ଦିଟା କମୋଡିଟି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ, ତାର ନାଁ ଆମେ କ'ଣ ବି ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟାକୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ୱାଇ ବୋଲି କହୁଛି। ଯଦି ସେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦୁଇଟା କମୋଡିଟିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡଲ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ପ୍ଲେନକୁ ମାନେ ଇମାଜିନ କରିବା, ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି এই যে ফিগার 1.2 দেখা যাচ্ছে তো, is it visible? हाँ सर। Yes, sir. Good. So many points are there. You see, one point is beta, one point is gamma, alpha, and so बहुत गुड़े point अच्छे. कितने point इम्ति ही परिवो innumerable points can be there. ये जितने सब point अच्छे point उड़ा गोटे coordinate. कोऑर्डिनेट कौन शो करूची ना सम अमाउंट ऑफ x1 गोटे कमोडिटी ना आ गोटे कमोडिटी ना जो y कहउथिले लेट इट बी x2, त x1 और x2 दुटा कमोडिटी अछि, ताले ई जो प्रत्येक बिंदु गोटे गोटे कमोडिटी कॉम्बिनेशन को देखौछि, कमोडिटी बंडल को देखौछि। कंप्लीटनेस एक्सियम एया कहउछि कि कंज्यूमर कैन कंपेयर all these consumption bundles, कौन कंपेयर करि परिबो ना एठी सपोज गोटे बीटा बोली गोटे पॉइंट अछि देखा जाउथबो, बीटा दिस वन, ओके, एठी गोटे पॉइंट अछि तार नाम अछि गामा हियर जो जगह रे कर्सर मूव करछि देखा जाउछि दिस वन, राइट। ताले ए जो बीटा आउ गामा ए दीटा भितरे कंज्यूमर कंपेयर करके कह दे परिबो, मेजर करबा दरकार नहीं, ताको दीटा बंडल दिया गले से कह परिबो कि आई प्रिफर बीटा टू गामा और आई प्रिफर गामा टू बीटा और आई एम indifferent between these two bundles. এই কথাটা যদি ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କ ଭିତରେ ଗୋଟେ कंपेयर କରିକି कंज्यूमर कहि परिला, then consumer is satisfying the axiom of completeness. ତେଣୁ कंज्यूमर जेहेतु गोटे rational ଆଉ individual, से डिफरेंट बंडल्स को देखिकी खाली एतिक तो कहदो एटा को प्रिफर करछु ना सेटा प्रिफर करछु, जब दीटा भितर से इंडिफरेंट हे गला कहबो दीटा जाके मो पई समान यूटिलिटी दबा बंडल अछि, त मो दीटा भितर इंडिफरेंट अछि। इतिक यदि कंज्यूमर रो एबिलिटी अछि, द कंज्यूमर satisfies the axiom of completeness. Would you understand? यदि कंज्यूमर बीटा और गामा भितर कंपेयर कर देला किंतु अल्फा कथा आसला को किछि कहि परनी कि मो प्रिफर करूची बीटा को अल्फा ठारू बा अल्फा को बीटा ठारू बा मो बीटा भितर इंडिफरेंट किछि कहि परनी, then axiom of completeness is valid. Is it understood?
That is the axiom of completeness. ଯଦି completeness axiom violate ହେଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ବଢି ହବନି, ଏଇ ଏନାଲିସିସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ। ସୋ ହିଗ୍ସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମାଇସ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଆକ୍ସିୟମ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିୟମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଆକ୍ସିୟମ୍ର ନାମ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି? ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫର 4ଟା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆମେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟଟା କେବଳ ନେଇଛନ୍ତି। এই কথা ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହାଇସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ বা ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାଫ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫର 4ଟା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ସବୁ 1 2 ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ। ଏ ଏଣ୍ଟାୟାରଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତା ଭିତରୁ 4ଟା ଜୋନ୍ ଆମେ ପରେ ପଢିବା, ସେଟା ସବୁ ଜୋନ୍ କାହିଁକି ସେ ନେଇଛି। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କହୁଛି କି if X is preferred, X bundle, মানে suppose alpha bundle, if bundle alpha is preferred to bundle beta, listen carefully. If there are two bundles, one is alpha, another is beta. If alpha is preferred to beta, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ bundle जोटा alpha ପାଖରେ ଅଛି, very close to alpha, is also preferred to beta. Okay? If alpha is preferred to beta, then a point which is very close to alpha, a slight modification ଟିକେ କରିଦେଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ bundle ଆମେ ଯଦି ପାଇଲେ, that will also be preferred to beta. ତାମାନେ alpha ଆଉ beta ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି points exist କରିବ, ଯୋଉ point ଗୁଡ଼ା beta ଠାରୁ prefer, କିଛି point ତା ଭିତରେ ଥିବ ଯୋଉଟା beta point ଠାରୁ prefer point ଥିବ। That is known as continuity. से continuity axiom थिबा कारणरू आमे एमति गोटे कर्व प्लॉट करि परिबा, नहले गोटे पॉइंट एठी हेले आ गोटे पॉइंट रो डिस्टेंस टिके बढ़ि जिवो ताटा, अतः आमे एमति जॉइन करि गोटे कंटीन्यूअस कर्व बनै परिबा नाही। दैट इज अनदर axiom, axiom of continuity. एठी कोन लिखा जाय छी, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस रिलेशन इज कंटीन्यूअस। वन लाइन में लिखा है छी, यार एक्सप्लेनेशन नाही, मु तार एक्सप्लेनेशन जहा कहली ताको ध्यान रो सहित सुनि लेबा। If bundle alpha is preferred to beta bundle, then another bundle which is very close to alpha is also preferred to bundle beta. If that is true, then continuity axiom is satisfied. Another axiom is known as axiom of non-satiation. तार अर्थ कौन ना, कंज्यूमर को एमती गोटे को पॉइंट नहीं, जो पॉइंट बंडल एमती नहीं, से बंडलटा पाइगले से कहब ना आउ अधिक किसी कंज्यूम करी ना। जब सेमती अच्छी तो सपोज आम बीटा बंडल कंज्यूमर कंज्यूम कले, तार आउ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन माने ए जो दिग को ऊपर को से आउ कौन सी पॉइंट को यदि कहला ना नहीं मोर आउ दरकार नहीं, दिस आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड एट पॉइंट बीटा, से आउ ऊपर को जीव ना। बट दिस axiom says there is no such point in this indifferent hypersurface, or एटा को आमे आ गोटे कहि परिबा, एटा गोटे कंजम्पशन सेट बोली कहि परिबा। ए जो एंटायर फर्स्ट क्वाड्रेंट जोटा रहउची, ए जो OX1 OX2, ए X1 बहुत बड़ और X2, ए जेते engulf area रहिला, एटा पूराटा एटी जेते पॉइंट्स सब रहिले, जोडा व्हाट द कंज्यूमर कैन कंसीव ऑफ और कंज्यूमर कैन इमेजिन ऑफ कंज्यूमिंग, जेते भी पॉइंट्स सब आसीबे, ऑल दोस पॉइंट्स बंडल्स तार सेट टाको आमे कहिबा, जेमति अल्फा बीटा गामा जेते सब पॉइंट सिंबॉलिकली दिटा चारटा पांचटा छटा पॉइंट तो अछि, अब केते पॉइंट देखि हबो ग्राफ रे, बट यू कैन इमेजिन देयर आर इन्यूमरेबल पॉइंट्स। सो ए जो इन्यूमरेबल पॉइंट्स अछि, यार सेट टाको कहले कंजम्पशन सेट। एक कंजम्पशन सेट रे एमती किछि पॉइंट नाही, जो पॉइंट टाको आमे कहिबा कि सेटा हला पॉइंट ऑफ सैटिएशन, ता माने से पॉइंट पाइ गले आ आगु बढ़िया पई तार इच्छा होबनी, एमती किछि भी पॉइंट नाही। सो दैट इज मीन बाय axiom of non satiety by axiom of non satiation, ए जो नंबर 4 axiom जोटा एठी हम देखुछन। ओके, सो ये हो जे गोटे axiom।
अच्छा बिगिनिंग रे गोटे थिला कोन एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिवनेस इटा को ये रिफ्लेक्सिवनेस रो कथा होची जदि अल्फा टा बीटा ठारो प्रिफर करा हला बीटा अल्फा रो प्रिफर होबो नाही जेमति हमर ग्रेटर देन सिंबल टा सेटा रिफ्लेक्सिव मुहे माने 5 जदि 4 ठारो बड़ हला 4 5 रो बड़ हे परिबो यस व्हाट हैपेंड योर म्यूट करले किछ पचारिबे पचारियो so that is there then non saturation कथा कहते तो मी हला non saturation there is no point in the consumption set which can be considered as the bliss point माने थर पाई गले माने स्वर्ग पाई गले आ मोर एक चेंज होबार किछ नै there is no point so ता ठारु मध्ये आगु ता ठारु जो अधिक क्वांटिटी जो बंडल लिथिबो से बंडल को कंज्यूमर प्रिफर करिवो तार कंज्यूमर्स जो यस ठीक है सर फास्ट पॉइंट तो टिके देखिए को पॉइंट एक्सियम कौन सेटा रिफ्लेक्सिवनेस रिफ्लेक्सिवनेस सेटा टिके कहि देबे ओके इट कौन लिखा है देखे पहुंचे वीक प्रिफरेंस रिलेशन नहीं सेटा छाड़ एट मु एते गोटे कथा नै मु खाली गोटे धारे ताको कहूची जे रिफ्लेक्सिवनेस अर्थ होची इफ देयर आर 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा then if alpha is preferred to beta beta can never be preferred to alpha strict preference if alpha is strictly preferred to beta then beta can never be strictly preferred to alpha बुझेला हां सर बुझेला किंतु से जगह रे जदी कोई प्रश्न आउ कि या गोटे धाड़ी कहले प्रिफर्ड टू जत बड़ा में कहउचंती प्रिफर्ड टू को दी प्रकार बुझा जाय गोटे होची स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आ गोटे होची वीक प्रेफरेंस होची स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आ इंडिफरेंस ए दीटा को मिसे देले हला वीक प्रेफरेंस बुझेला जेमति हमें मैथमेटिक्स रे यूज करती ग्रेटर देन हेले हो इक्वल हेले हो इट इज सेमति ग्रेटर देन तो हम भाबियो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बंडल बीटा इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू अल्फा बुझेले कि हां सर बुझेला बंडल बीटा जदि इंडिफरेंट टू अल्फा हला इंडिफरेंट हेले भी वीक प्रिफर्ड आ स्ट्रिक्ट हेले भी वीकली प्रिफर्ड तो वीक भीतर स्ट्रिक्ट आसुची आ इंडिफरेंट आसुची बीटा जाके आसुची मु कोन कहले रिफ्लेक्सिव रो अर्थ if beta bundle is strictly preferred to alpha bundle then the opposite can never be true and alpha or beta are strictly preferred hobo nahi that is meant by reflexiveness बुझियला हां सर थैंक यू एटा को आउट के एक्सटेंड कर देले से तो आसीबो ट्रांजिटिविटी ऑन ट्रांजिटिविटी सपोज देयर आर 3 बंडल्स है ना रिफ्लेक्सिवनेस को आउट के बढ़े दवा तबरे कोन आछि ना सपोज अल्फा इज प्रिफर्ड टू बीटा अल्फा बीटा मुझे तो कहछि गोटे बंडल कथा बुझिबे जो पॉइंट किछि एक्स कमोडिटी किछि वाई कमोडिटी को लेके गोटे बंडल होछि जोटा माने ग्राफ रे देखौ छथि suppose alpha bundle is preferred to gamma beta bundle and beta bundle is preferred মানে what straight prefer কথা কইছি is preferred to gamma bundle then প্রথমে মু alpha কথা কইলি now alpha will also be preferred to gamma okay if alpha is preferred to beta beta is preferred to gamma then alpha must be preferred to gamma ये हेले से सब गुडा को लिंक करथि जते पॉइंट सब अछि सब पॉइंट भीतर से ट्रांजिटिविटी एस्टैब्लिश करी कि तब प्रूफ कर दबो तनो ये सब गुडा जते सैटिस्फाई हैला ए दीटा तो वेरी इंपोर्टेंट गोटे होची कंप्लीटनेस और गोटे ट्रांजिटिविटी जोटा रिफ्लेक्सिवनेस रो एक्सटेंशन ए दीटा सैटिस्फाई हेले कंज्यूमर रो प्रेफरेंस रिलेशन एग्जिस्ट करिवो ए दीटा निहाती जरूरी तापरे आउ किछि गोटे तार जो प्रेफरेंस रिलेशन ता वेल बिहेव्ड हो केते बने म्हणजे तोल ए दीटा सहित आउ किछि एक्सियम सैटिस्फाई हो तो आउ किछि एक्सियम जो 1 2 दीटा दीटा होछि एसेंशियल अब बाकी जो गुडा अछि तीन रु आगु जा सब अछि से गुडा होछि यदि सैटिस्फाई हैला then consumer's preference relation is said to will be said to be well behaved preference relation any question
ओके आउ किसी एक्सियम रो कथा थिला आमे पढ़ले रिफ्लेक्सिवनेस ताको आउ टिके एक्सटेंड करके मो ट्रांजिटिविटी बोली कहली and I told that that is very much essential. In completeness, this is also essential. If these two are violated, then the Hicksian theory can never proceed. Next होची continuity कथा कहली, non-saturation कथा भी कहली. Another axiom number 5, this is axiom of convexity. Convexity. Convexity रो अर्थ कौन? Convexity को गोटे statement रे हमें बुझे दबा जे averages are preferred to extremes. Author repeat करूँ. Averages are preferred to extremes. जदि यह हुए ताले कंज्यूमर रो जो प्रेफरेंस रिलेशन रहुची माने जो पॉइंट को पॉइंट को सी प्रिफर करिवो काहा ठारू तार जो एबिलिटी टू ऑर्डर दी बंडल्स सेटा सैटिस्फाई करूची कन्वेक्सिटी को गोटे एग्जांपल देले बुझी हबो सपोज x1 हैला भात और x2 हैला डाली मो दीटा पॉइंट नोची गोटे पॉइंट ऑन द एक्सिस सपोज एठी अछि तो ओनली राइस इज देयर नो दाल a point अछि on the axis. Another point is on the vertical axis. So only dal is there, but rice is not there. आउ ता मझिरे गोटे पॉइंट इटा को मुझे जॉइन कर देबी ए दीटा पॉइंट को मु जॉइन कर देबी जॉइन करिकी मझिरे गोटे स्ट्रेट लाइन में जॉइन करिबी दीटा पॉइंट को गोटे लाइन में जॉइन करा जाय पारि से जो लाइन रो मझिरे जे कोनसी गोटे पॉइंट ने से पॉइंट कोन हेतिबो some amount of rice, some amount of dal, some amount of x1, some amount of x2. I can say in that way. The consumer एक कॉर्नर पॉइंट दीटा को प्रिफर करिवो नाइ मझिरे जो पॉइंट सब आसुचे से पॉइंट को प्रिफर करिवो कॉर्नर टा कोडा करिवो तमे जदि कंज्यूमर तमे ओनली राइस नो दाल ना ओनली दाल नो राइस सेटा को से सिचुएशन को तमको जदि दीटा अंदर गोटे कॉम्बिनेशन मिलुची linear combination तो कोटा को प्रिफर करिवो मिडिल पॉइंट मझिरो पॉइंट then your behavior is convex behavior. Yes. You are preferring the average of those two extremes to the extremes. बुझे लगी your behavior is correct. तो इटा it's logical. तो इटा हो जो गोटे axiom. Averages are preferred to extremes. तामने दीटा पॉइंट को जॉइन कर देले जो मझिरे जते सब पॉइंट आसुची से पॉइंट गुला ए कॉर्नर पॉइंट ठारो प्रिफर्ड पॉइंट एति की भल के बुझी जा तामने ए पॉइंट गुला ता संगे इंडिफरेंट केबे ही परिबनी स्ट्रेट लाइन हे गेले इंडिफरेंट होबो नहीं काहे ना मझि पॉइंट गुला प्रिफर्ड पॉइंट हे प्रिफर्ड इंडिफरेंट हेबो जैसे जो पॉइंट से समान यूटिलिटी पाउत another thing ये गोटे axiom गला axiom of convexity आ गोटे बोले कि चेटी पर axiom of selfishness axiom of selfishness मु सेटा को कहबी axiom of non axiom of monotonicity मु ताको आ गोटे शब्द कोन देबी ता भाई monotonicity बा मु कहबी consumers preference consumer preferences are monotonic monotonic माने कौन गोटे कौन से थम्स अप ना कौन गोटे कंपनी तार एडवर्टाइजमेंट देनी बिल मांगे मोर एक कंज्यूमर सब बेले बिल टा अधिक अधिक मागिबो है कि कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस monotonic means more is preferred है ना गोटे बंडल रे x1 अछि 5 टा और x2 अछि 5 टा आउ गोटे बंडल रे x1 अछि 6 टा x2 अछि 5 टा ए प्रथम बंडल द्वितीय बंडल भितर कंज्यूमर कोडा को प्रेफर करिवो द्वितीय टा ना प्रथम टा 5 5 द्वितीय टा हला 5 6 और 6 5 कंज्यूमर कोडा को प्रेफर करिवो सेकंड टा को because in that bundle more units are there at least arata saman अछि
एटार कम से कम गोटे यूनिट ताठार अधिक अच्छे तो कंज्यूमर विल प्रिफर दिस एंड दिस इज हिज यूनिवर्सल बिहेवियर. If this is true, then we can say that consumers' preference is monotonic. कौन कहली monotonic. More is preferred. ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏଠି କହିଛି କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି axiom of selfishness. This means consumer prefers more to less. ବୁଝିହେଲା ଏଇ axiom ଯଦି ସବୁ satisfy ହେଲା ତାହେଲେ ହିଗ୍ସଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ we can develop a theory for the consumer. ଯେତିକି ସବୁ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଜିକାଲି କରେକ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ କହିବା axioms. Is it understood? এই পর্যন্ত কথা axiom গুড়া ସବୁ ବୁଝିହେଲା? Would you understand? Yes, sir. Yes, sir. Good. ମୁଁ ଯେତେ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ତଥାପି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଡାଉଟ୍ ହବ ଯେମିତି ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ସେଠି ପଚାରିଦେବ so that I can get a feedback. ତମେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିଲା କି ନ ବୁଝିଲା ବଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି so you have to respond. So I told you that the first two axioms are quite important. If those two are satisfied, then only a preference relation will exist. However, in order to make the preference relation well behaved, then the other axioms, starting from 3 to 6, must also be satisfied. Must also be adhered to by the consumer. Otherwise, we cannot say the preference relation is well behaved. So, जब ये सब गुड़ा satisfy है गला consumer द्वारा जो टेक्नोलॉजिकली होगा दरकार ताकि consumer ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ theory develop କରିପାରିବା. Okay? ସେ theory କରିବା ପାଇଁ ଦିଟା tool ଆମର ଦରକାର. ଗୋଟେ tool ର ନାମ ହେଉଛି indifferent ବା indifference curve. Indifference curve. ये indifference curve ଟା କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି ଏ ଯୋଉ curve ଟା ଦେଖା ଯାଉଛି this is indifference curve. What is there in this curve? ये कर्व गोटे देख गोटे एटाकू दुईटा प्रकार शेप थाए गोटे कन्वेक्स गोटे कनकेव आ गोटे लिनियर ये केमती देखा जाउची ओरिजिन आडू जदी हम देखिबा ए ओ आडू ए ओरिजिन आडू को लागि आसुची कर्व दिस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व दिस इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बुझिले कि कन्वेक्स टू ओरिजिन ये काहे की कन्वेक्स टू ओरिजिन ता ऊपर भी किछि क्वेश्चन पाई परिबो. Why this curve is convex to origin? So you may find question on that. But that is explained in this diagram. See, suppose one point is gamma. Point you should show points on the curve. So away from curve diya. This conjunction set in this diagram has been divided into 4 different segments. Segment 1, 2, 3, 4. 4 different segments. Okay. Suppose one point is taken here, this intersection point. Okay. Then a point. This point is visible to you. You point remove cursor rakhichi. Intersection point to dekha jauchi ethi gote. से point टा suppose हमें तार गोटे कौन गोटे नाम देले let it be कौन इठी नहीं alpha नदी नथिबो let it be alpha. This point is alpha. Then if you move vertically, that means amount of x1 remaining the same, these vertical points are involving more of x2. More of x2 है गला, those will be preferred points because the consumer's preference is monotonic. If at least one good is more in amount, then that bundle will be preferred. Similarly, a point if we move horizontally, then also you see that x2 remaining same, amount of x1 is involved more in these rightward points. A point गुड़ा भी सेमती है जीवो preferred point. So एठी जो zone 1 है गला, zone 1 रे जो points सब अच्छी, all these points are preferred points. All these points are preferred points. Understood?
ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଠି ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖା ଯାଉନି। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଟା ଦେଖାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଗ୍ରାଫ ଦେଖା ଯାଉଛି ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ମୋ ଯୋଉ କର୍ସର ଟା ଅଛି ମୋର କର୍ସର ଦେଖା ହଉନି? ନାଇଁ ଏଇଟା ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ଯୋଉଟା ମାର୍କିଂ କରିକି ପଏଣ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ, ଭିଜିବୁଲ ଏଇ ହଉନି। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ର କିଛି ନାଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବି ଆଉ ଏ ଦିଟା ଏକ୍ସିସ ଯାଇଛି। ଜୋନ୍ 1 ବୋଲି ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ ସେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆଲଫା ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଏଇଥିରେ କର୍ସର ମୁଭ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ବୋଧେ ଦେଖଉନି ତମକୁ ନାଇଁ? ଦେଖାଯାଉନି ସାର୍ ସେମିତି ଦେଖିବା। ତମେ ଠିକରେ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ କଥା କର୍ସର ମୋର ଦେଖାଉନି? କର୍ସର ଟି ହଁ ଦେଖାଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଟକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏ ଆଉ ବି ଲାଇନ ଦିଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମୁଁ ଆଲଫା ବୋଲି କହୁଛି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ? ହଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଜୋନ୍ 1 ବୋଲି ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଜୋନ୍ 1 ରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇଛି, ଏ ବି ଆଉ ବିଟା। এই ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ପ୍ରିଫର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆଲଫା ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ये अल्फा रो सी है ना प्रिफर्ड पॉइंट। तामाने कंज्यूमर विल प्रिफर दोज, मान जोन 1 इज ए प्रिफर्ड जोन। तार अपोजिट देखो जोन 3, अल्फा पॉइंट रो बा पटकू आ तळकू जो जोन टा कवर ହେଇଛି जोन 3 बोली लिखा जाइछि, सेटा डेफिनेटली इंफीरियर पॉइंट, माने ऑल पॉइंट्स आर इंफीरियर टू पॉइंट अल्फा। अल्फा बोली किसी जो नाही या भितरे मु सेटा से पॉइंट को अल्फा बोली मने मने तुमको धरि नै कि कहूछ, तमे सेटा धर ए पॉइंट इज अल्फा। बुझिला? जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिटा निश्चित गोटे तो ओरिजिन आ गोटे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो निश्चित से पॉइंट को अल्फा बोली कहूछ। सो जोन 3 इज इंफीरियर जोन टू पॉइंट अल्फा। तेणु जोन 1 और जोन 3 रे कौन सी कर्व जब जाए से कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहा जाय परिबो नहीं, कारण से माने केबे भी समान यूटिलिटी देबे नहीं। जोन 1 विल ऑलवेज गिव हायर, जोन 3 विल गिव लोअर। तेणु से गुडा इंडिफरेंट पॉइंट नुहे। इंडिफरेंस कर्व तेणु तापई गोटे पॉसिबिलिटी होची से 2 और 4 दे के ट्रैवल करिवो। ये जो कर्व का हम देखुछंती जोन 2 और जोन 3 सॉरी जोन 4 या दे के से ट्रैवल करिवो। सो question is, can we find points which will give equal satisfaction to the consumer? The answer is yes. ये जो कर्व जो जो पॉइंट को टच करके जाइछि से पॉइंट गुडा समस्ते कंज्यूमर को समान satisfaction, that is u0, it जो u0 लिखा IC0 by u0 bracket लिखा जाइछि, u0 is utility. All these points are giving the same utility to the consumer. So the locus means joining the locus of all those points which give rise to the same level of satisfaction to the consumer is known as the indifference curve. तो indifference curve एमिति ही देखा हेलो कॉन्वेक्स। ये एक कथा होची जे सीधा लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थ्रू अल्फा, ताको हम कहि थाते इंडिफरेंस कर्व केमति काई गेला ना सेमिति भी पॉसिबल नहीं। कहीं ना एक्सियम ऑफ कन्वेक्सिटी कौन कहूची कि दीटा पॉइंट को जब तुम जोड़ी दबो स्ट्रेट लाइन रे तार मझी पॉइंट गुला सब आसीबो, से पॉइंट गुला प्रिफर्ड पॉइंट है। हमर दरकार इंडिफरेंट पॉइंट। प्रिफर्ड पॉइंट जदि होची ता इंडिफरेंट पॉइंट ता तो उठके थिबो। सेति पई जे कोनोसी दीटा पॉइंट इंडिफरेंस कर्व तुम जोड़ी दियो हैला, आ जो इंटीरियर पॉइंट गुला सब रहिला कर्व रो से लाइन तळे रहइबो। यदि तळे रहिला ताहाले सेटा कन्वेक्स ओरिजिन होबो। प्रिफरेंस ता जेहेतु कन्वेक्स प्रिफरेंस रहुची कंज्यूमर रो, सेति पई इंडिफरेंस कर्व ता मरी कन्वेक्स टू ओरिजिन। So this is the shape of the indifferent. It must be downward sloping. It must be convex to origin. केबे ना 6टा जाके एक्सियम जदि सैटिस्फाई होवे।
जदि या भीतर किसी वाइब्रेशन हो गला ये कर्व शेप मध्य अलग प्रकार हो यदि कन्वेक्सिटी एक्सियम टा नष्ट हो गला ताले इंडिफरेंस कर्व मे बी ए डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आउ एमती कन्वेक्स ओरिजिन होबो नहीं यदि मोनोटोनिसिटी टा नष्ट हो गला कंज्यूमर ताको सैटिस्फाई करि पाउ नहीं कंज्यूमर इज नॉट प्रिफरिंग मोर टू लेस सपोज कंज्यूमर इज प्रिफरिंग लेस टू मोर ताले इंडिफरेंस कर्व से डाउनवर्ड स्लोपिंग हो So if all these axioms are satisfied, then indifference curve will look like this. Could you get this explanation? I take a pause for 10 seconds. If any question, please raise. Kaar kichhi pacharibar achi? No. Okay. Then another thing, we have to understand some more properties of indifference curve. What are the properties? One property is reflected in this figure 1.3. What is that? It is written here. Higher indifference curve gives higher level of satisfaction. You see there are two curves. One is IC0 representing U0 utility. Another indifference curve is named as IC1 which is showing U1 utility. And U1 is greater than U0. Right? U1 is higher, U0 is lesser. So, point B is is representing higher utility than point A. Sorry, it point on the tolta achi tolta dekha hoji eta IC E. E So E tharu B re adhika utility. तो E टू B को जेतोले कंज्यूमर जाउची कंज्यूमर अधिक सैटिस्फाई E टू A को भी जति जाउची ताले भी से कंज्यूमर सेट E टू C को जति जाउची ताले भी से हायर यूटिलिटी पाउची सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टी ना व्हिच एक्सियम को एक्सियम को मोर इज प्रिफर्ड व्हिच एक्सियम I told before a while you are not listening properly. I told monotonicity, selfishness. Okay, sir. monotonicity. Due to monotonic preference, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. Next property. This is figure 1.4. Indifference curves can never intersect. They can't intersect. Intersect करने नहीं. ये जो पॉइंट सी आछिंती पॉइंट सी केबे आसीबो नाही इंडिफरेंस कर ऊपर जोटा देखुछन सेटा ही ठीक दीटा जंक भीतर गैप रहे ये केबे इंटरसेक्ट करिवे काहे की करिवेनी एथि पई करिवेनी गोटे वैल्यूएशन हिजो कोन एथि सी आउ बी ये गोटे इंडिफरेंस कर्व रे अछंती IC0 U0 satisfaction तो सी आउ बी दीटा इंडिफरेंट पॉइंट since they are lying on the same indifference curve IC0 U0. C and A are also lying on another indifference curve that is IC1. They are also representing the same level. If C is indifferent to A, C is also indifferent to B, then A and B must also be indifferent. Okay. जो axiom of transitivity अछि transitivity कौन कहूची if C is indifferent to A okay and it is indifferent to B then A and B also must also be indifferent but they are not indifferent A और B में gap देखी पर्सन क्या है से गोटे कर्व है ना दीटा अलग अलग पर two different indifference curve will show different level of satisfaction so ताले indifferent हबो ही नहीं एत देखा जाउछि जे A is preferred to B right so एटी वायोलेशन हे गला ट्रांजिटिविटी तेणु एमती केबे संभव नुहे तमे इंडिफरेंस कर्व यदि इंटरसेक्ट करिवे दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल अराइज सो दिस इज नॉट पॉसिबल सो इंडिफरेंस कर्व ये हला गोटे प्रॉपर्टी फर्स्ट तो हमें कहबा त शेप ऊपर डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू ओरिजिन सेकंड हमें कहले कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन थर्ड रे हमें कहले टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट
These are the features, the properties, the characteristics of indifference curves. Any question? The next content is utility maximization. You see, ଏବେ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର ଚଏସ୍ को ଜାଣିବା ଦରକାର कि କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କନଜମ୍ପସନ ସେଟ ର ପଏଣ୍ଟ if so many points are there then consumer को गोटे पॉइंट ର डिसीजन नब and you all know students decision making is always a tough exercise तमे समस्त भी तमर से डिसीजन को लेके सब बेले फसुतो ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫରେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିବି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବି ସାଇନ୍ସ ପଢିବି ନା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରିବି ନା ୟୁପିଏସସି ରେ ଯିବି ତେଣୁ କନଜ୍ୟୁମର ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଚଏସ୍ ହେଲା କି ସିଏ ପୁଣି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କୋଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ କରିବ ତ କୋଉଟା କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମର ସେ ଗୋଟିଏ କୋଟି बाजार को जाए सब देखी देखी गोटे गोटे कौन किणे एटा एतिकी सेटा सेतिकी किणे से तार आसे सेटा केमिति हुए ता बिहेवियर को हमें देखि कि हम सेटा स्टडी कर दे परिबा है केमिति तो हमको दीटा टूल दरकार एतिकी माने बुझिबा पाई one tool you have already grasped that is indifference curve that is done another tool is budget line कौन ना बजेट लाइन गोटे तबे भाबिले तार लक्ष्मण रेखा कंज्यूमर रो कंस्ट्रेंट कोन अछि कंज्यूमर पाखरे लिमिटेड मनी इनकम अछि प्राइस गुडा से टेक कर से प्राइस ऊपर डिसीजन नहीं करि प्राइस ता मार्केट रे डिसाइड होछि कंज्यूमर हैज टू कंप्लाई टू दैट प्राइस जहां प्राइस है से प्राइस से जहां किनवा कथा किन बट ता इनकम ता लिमिटेड अछि तेनो तार जो गिवन मनी इनकम ता पाखरे ता पॉकेट रे जति की पैसा अछि जति की अर्थराशि अछि मनी इनकम से थरे से जति की किनि परिबो कमोडिटी से कमोडिटी रो बंडल टाको माने डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जोड़ी देले गोटे लाइन पाइबा से लाइन टाको हम कहबा बजेट लाइन फॉर एग्जांपल कंज्यूमर पाखरे 100 टका अछि आइबो x1 रो प्राइस जदी होला 5 टका ताहले धरि निया जाऊ से खाली x1 किनिबो x2 किछि किनिबो ताल से केतटा किनि परिबो 100 टका अछि x1 गोटा होछि 5 टका मींस p1 इज 5 rupees ताल से केतटा किनिबो 20 यूनिट्स 20 जदी किनदला x2 जमा किनि परिबो तो 20 आर ता हेगला 0 दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट b सेमती यदि ए जो x2 रो दाम 10 टका ताले x2 खाली किनिबो x1 जमा किनिबो ताले केतरा किनि परिबो 100 टका रे ना 10 टा यूनिट किनिबो x1 हेगला 0 so 0 10 you are getting another point that is point a यदि एको किछि ताको किछि किनिबो ताले ए लाइन रे से माइग्रेट करबो ए आउ बी जो पॉइंट लिखा होछि इटा ताको जॉइन करथले जो लाइन होबो से लाइन रे से माइग्रेट करबो जदि अधिक x1 किनिया को चाहिबो ताले b पाखा पाखी पळे आसीबो जदि से अधिक x2 किनिया पय चाहिबो ताले से a पाखा पाखी छिबो ए मझी पॉइंट गुडा सब होला तारो डिफरेंट alternatives so if you join a and b you will get line that line is known as budget line that means within the mane given budget how much what are the alternative combinations of the two goods x1 and x2 which can be purchased by the consumer by spending her entire money income her pura money income खर्च सर ए बजेट लाइन रो जे कोन से पॉइंट रे तमे रहइबो ताले टका 100 खर्च हे जाई छै पूरा पैसा खर्च हे छै यदि ताठो से किछि कम खर्च कला ताले से ए बी लाइन रो बा पट को ओरिजिन एड को ए ट्रायंगल मझी रे कोठी रहइबो अब ताठो अधिक से जाई परिबो ता पाखरे पैसा नाही तो ए भी बाहर को से जाई परिबो नाही तनो एनी ऑप्शन beyond AB line is not possible by the consumer that cannot be attained सेठी पहुंच परिबो किनि परिबो अब भीतर जो पॉइंट गुडा रहले ट्रायंगल भीतर कंज्यूमर से गुडा किने किछि
ताहले तार जो satisfaction जो IC0 गोटे इंडिफरेंस कर्व अछि से IC0 ए भलिया कर्व रे सब रहि छै तापई तो पॉसिबिलिटी थिला IC1 को जाई पारथन आउ टिके खर्च बढ़ेबो आउ टिके खर्च बढ़ेले IC2 को जाई पारथन से IC0 रे कहीं रहे 0 जदि गला कम satisfaction पाइला that will be a suboptimal decision तेणु optimal decision कौन हो the consumer will try to attain the maximum attainable indifference curve IC0 IC1 IC2 IC3 हमें ये देखुछथि IC3 is not achievable कहीं ना बजट तार लिमिट तला जे A B लाइन ताकू बाहर से जाय IC3 is not possible IC0 IC1 IC2 ये सब गुड़ा ता पई पॉसिबल ता बजट लाइन रे देखा जाउछि IC2 ता पॉसिबल की yes or no indifference curve सब एबोली जति अंका है छि Yes, sir, possible. केतटा पॉइंट रे IC2 रो केतटा पॉइंट को से अचीव करि परिबो 1 point, that is E. that is equilibrium point that is the only point one and only point से पॉइंट को से तार मनी इनकम भीतर से आसी परिबो देखो यदि पॉइंट ए रे रुए जति के खर्च करूची पॉइंट बी रे रुए के सेति खर्च करूची पॉइंट ई रे रहले के सेति खर्च करूची किंतु जदि से ए रे रहि गला तार से गोटे तळुआ इंडिफरेंस कर्व को टच करियो माने पाई परिबो किंतु जदि से टिके डाहन को आसी कि ई पॉइंट को आसी गला तार से IC2 को प्राप्त करलो ताटो कोन डाहन को लाओ के कोन तळ खसिबो तो ता पई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जोटा देखौछि सेटा हला ई पॉइंट E is the equilibrium point because that will fetch the maximum level of satisfaction by spending her entire money. So that is the equilibrium point. बुझे लगी तो एते गुडे पॉइंट देखौतला कंज्यूमर कंजम्पशन सेट रो ता भितर से गोटे पॉइंट पाई गला कि को पॉइंट को से पॉइंट से रहिबो पॉइंट ई रे रहिबो पॉइंट ई रे हला माने एते x1 ना x1 स्टार x2 केते ना x2 स्टार ई पॉइंट तो मैं x1 को पढ़े असलो x1 एक्सिस को x1 स्टार and you are migrating to x2 axis you are going to x2 star right so how much of consumption of which good is to be made that was the question for the consumer particular bundle जदि से पाइला तार चॉइस डिसीजन की तार हे गला ऑप्टिमल डिसीजन हे गला जेतो तमे कहबा तार चॉइस फिक्स हे गला so OX1 star and OX2 star of X1 and X2 respectively will be consumed by the consumer which is feasible in her budget, given money. This is known as consumer security. Is it understood? Or any question? Any question? If questions are not coming spontaneously, immediately, I cannot wait for long because in these 2 hours I have to complete a lot of things. Obviously, somewhere when I am hardly half an hour ago. So this is consumer's equilibrium. आपको मैथमेटिकली मध्य हम एक कर दे पाइबा मैथमेटिकली ताको हमें एक बड़ी भाबरे कंज्यूमर्स यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम UMP એટલે કાઈ પ્રોબ્લેમ કોણ પ્રોબ્લેમ થલા યુટિલિટી મેક્સિમાઇઝેશન મેક્સિમમ યુટિલિટી કોટા से पाइ पाइ तो ताको हम ଗୋଟେ फंक्शन हिसाब रे लिखि देते कंज्यूमर टास्क होची मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फंक्शन यूटिलिटी कोण ना कंज्यूम करले तो यूटिलिटी मिलिबो कंज्यूम का करिवो ना तो मात्र दुटा कमोडिटी हम नै चलते अज्यूम करछन x1 and x2 so utility is a function of x1 x2 okay कंडीशन कोण ना x सब रहला x गुडा सब पॉजिटिव म नॉन नेगेटिव है नेगेटिव कंजम्पशन तो पॉसिबल नहीं आ गोटे बड़ कंस्ट्रेंट होची ता पाखरे जो बजट अछि p1 x1 p2 x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू m कारण m डाहण को से जाय परिबनी m रो अधिक से परि परिबनी एया को सैटिस्फाई करिकि ते को जगह रे रहिबो हम देखिले ई पॉइंट इज द कंज्यूमर पॉइंट इट इज मैथमेटिक्स भी थाए आ जो माने मैथमेटिक्स स्टूडेंट अछंती +2 कम से कम मैथमेटिक्स पढी छथि ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ର ट्रिक गोटे अप्लाई करदेबे गोटे लाग्रेंजियन फंक्शन लेकी ताको बाहर करदेबे देखतार सॉल्यूशन फाइंड आउट हे जिवो सेटा होची x1 स्टार x2 स्टार इट इज लाइक ग्राफिकली देखा जायछि
So that is there. It is mathematical presentation actually दिया it a Lagrangian function L for Lagrangian. Lagrangian केमती हुए ना जो objective function objective कौन utility maximization maximize u which is a function of x1 x2 plus ए जो constraint अच्छी ए constraint को अभी zero form को नहीं आसीबा केमती आएगा ना m minus p1 x1 minus p2 x2 p1 x1 plus p2 x2 को गोटे साइड को नहीं जिबा माने m साइड को नहीं जिबा प्लस अछि माइनस एक पड़े गोटे साइड 0 हे गला 0 रहे गला परे ता संगे हम गोटे कांस्टेंट गुणिबा ता ना सपोज लैम्बडा एक जो गुणा है लैम्बडा so objective function plus the constraint in a zero form into lambda so this is known as the Lagrangian function तो ए function टिको it जो d लिखा जाइए d is not correct it must be written as a del partial derivative so del l to del x1 is 0 del l to del x2 is 0 del l to del lambda is 0 तो ए तीनटा सहित ताको डिफरेंशिएट कर सला परे हम तीनोटी इक्वेशन पाइले अब तीनोटी अननोन देखला what are the unknowns in this Lagrangian equation x1 x2 और lambda these three are unknown काहे ना m हला मनी that is given एवरे पैरामीटर कंज्यूमर ପାଇଁ p1 मार्केट रे डिटरमिन हे गला प्राइस p2 से भी मार्केट रे डिटरमिन हे गला कंज्यूमर को किसी डिसीजन लबार नै एको नै मनी इनकम भी बढ़ी परिबनी कमी परिबनी सडनली p1 p2 को मध्य से एक्सेप्ट करिवो so these three are parameters m p1 and p2 variables के x1 x2 and lambda these are to be determined so setting तीनटा unknown we need three equations these are the three equations when you solve them you will find your answer and that answer will give you how much of x1 that is x1 star how much of x2 that is x2 star and how much what is the value of lambda that is lambda star you will find here lambda I don't have that time to explain you एक वो मैं पढ़िया पे बस 1.5 मास टाइम दो 10-15 टा क्लास में तक बुझो so इतने समय नहीं but this lambda is known as marginal utility of money that means if you are given 1 unit of money suppose 1 unit of money is 100 rupees तो मैं 100 टका पाइले कितने खुशी हो कितने satisfaction हो that is known as marginal utility of money that lambda is marginal utility of money so these things can be decided in this model so this portion is done any question next is decomposition of price change when the price of a commodity changes other things remaining same suppose here you see let's say this is our budget line AB बुझिएगा AB budget line consumer रो originally थिला आउ तार इंडिफरेंस कर्व जो तको इंडिफरेंस मैप अछि तमे देखिबो AB budget line is tangential एटी जो हम देखि छी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जगह रे होछि when AB line is just kissing the indifference curve not crossing it not intersecting it गोटे पॉइंट जस्ट टच करके पड़े तो सेटा को हम कहते दिस इज AB is tangential to the indifference curve AB is tangent माने गोटे पॉइंट टच करके चले जी नॉट इंटरसेक्ट so that tangence is the requirement for consumers equilibrium if that is the case then we are seeing here in this figure 1.6 that E0 is the equilibrium point when AB is the budget line. Now let's say P2 remaining same, P2 means price of X2 remaining same, P1 has declined, that ये कमी गई थी, माने X1 का सस्ता है गला, तार प्राइस कमी गला, then what will happen to its budget line? कि प्रथम एक जेतिक किणी पड़ला जेतु सस्ता है गला, से आउ टिक अधिक किणी परिबो, yes or no? पहुंचना नहीं रिप्ले yes yes sir हाँ तेणु ए डी लाइन टा टिके शिफ्ट तो एग्जैक्टली करा जीवनी टिके ए पॉइंट समान रहला किंतु से जाई पड़ला सी को पड़ला सी पॉइंट को पड़ला ए सी को से पड़ला
कहीं ना एक P2 समान जेहेतु रही ए पॉइंट रे किसी चेंज हेबनी किंतु बी पॉइंट आउ बी पॉइंट रहबनी सस्ता हेतुवा कारणरू कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ x1 therefore the line is now flatter new budget line is AC the new equilibrium is E1 बुझेला ये जो प्राइस फॉल कारणरू कंज्यूमर x1 प्रथम डिमांड करूला x1 0 according to E0 point now E1 point में तो equilibrium आसीगला तब कंज्यूमर कैन परचेज x1 dash ये जो कंज्यूमर एतिकी जो कंज्यूम करेला अधिका this is due to fall in the price this is known as price effect when price of a commodity declines consumer purchases more of that commodity how much more due to how much reduction in price that is known as price effect mathematics से कर ले dx to d p1 that is known as price effect just put this again So that is the situation. This is price effect. In price effect can be decomposed into two. One is income effect, another is substitution effect. कौन ना ये कथा होची कंज्यूमर एठू सेठी जो गला तार दीटा कारण गला गोटे होची तार मनी इनकम समान थिले भी रियल इनकम टिके बढ़ी गला रियल इनकम वास्तविक है कौन व्हाट इज दैट द परचेजिंग पावर इज रियल इनकम फॉर एग्जांपल money income 100 rupees price of a commodity suppose 5 rupees ताहले से केतटा किनि परिबो त रियल इनकम वाला 100 by 5 20 यूनिट से किनि परिबो x1 तनो सेटा हला रियल इनकम सपोज प्राइस 5 रु 4 को खसी आसिला ताहले से 100 टंका मनी इनकम समान अछि प्राइस ही तो कम गला से वर्तमान 25 यूनिट इनकम ये जो परचेजिंग पावर फॉर 20 यूनिट्स ऑफ x1 था नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 25 units of x1. That means there has been an increase in the real income. Money income remaining the same. बुझिए ना तब जब प्राइस कमी जाइए तार परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ीगला से परचेजिंग कैपेसिटी बढ़िया कारणरू से जति के अधिक किणला सेटा हला इनकम इफेक्ट सेटा को हम जानिबा केमती जानिया पई हम गोटे काम करबा कंज्यूमर तो न्यू लाइन को पड़े ए आउ सी को न्यू बजेट लाइन को आमे न्यू जगह से टिके बेटर ऑफ फील करछि आमे कोन करबा ताठार किछि मनी इनकम काढी आनिबा एमिति वे रे काढी आनिबा जेमिति से पुराना इंडिफरेंस कर्व को पळे आसी पुराना इंडिफरेंस कर्व थला IC0 ओके जोटी E0 जो पॉइंट अछि सेही कर्व ता सेही इंडिफरेंस कर्व दैट इंडिफरेंस कर्व इज योर original indifference curve so you take away some money income in such a way so that the consumer will come back to the original indifference curve सेटा हम सेते की काढिबा तेनु ऊपर का जदी a अछि तळे a लिखा जाय छि यू रीड इट एज a डैश मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक दीटा a केमथि हो गोटे ऊपर ता है तळटा को a डैश बोली पर तो से जो a डैश को से आसिला आ a डैश एटा जो c डैश लिखा जाय छि a डैश c डैश को से पय आसिला ये जो पैसा काढलवा मेकानिज्म टाको कहा जाए कंपेंसेशन मेकानिज्म यू टेक अवे मनी इनकम इन सच ए वे सो दैट द कंज्यूमर कम्स बैक टू द ओरिजिनल लेवल ऑफ यूटिलिटी यदि प्राइस बढ़ी थांता तबे ताले कंपेंसेशन पॉजिटिव दे थांतो ताको दे थांतो पैसा सो दैट यू गो कम बैक टू द ओरिजिनल इट जेतु कमी छि तम ताको काढी नै छि बेटर ऑफ इथला ताको ता लेवल को नै आसी बट कंज्यूमर यदि ए सी डैश लाइन को आसिला ताहले तार इक्विलिब्रियम कोठी हबो वर्तमान जोठी ए सी डैश टैंजेंशियल हबो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व को कोठी होची इन व्हिच पॉइंट को जगह रे कैन यू सी ए पॉइंट लाइक u1 डैश टेल मी समथिंग सर E1 डैश को हां e1 डैश रे से इक्विलिब्रियम को आसीबो इक्विलिब्रियम पैसा हमें ताटू काढी नेले से आउ e0 पॉइंट रे रहउनी
सी आस जाउची कोठी की ना E1 डैश को बुझिला ए E1 डैश रु E1 जो देखा जाउची जो मूवमेंट टा होची इनकम इफेक्ट काहेकि ना ए दीटा पॉइंट रो डिफरेंस होची कोन एठी केवल इनकम रो डिफरेंस कंज्यूमर को जदि किसी पैसा मिले ताहले से बजेट लाइन तार शिफ्ट हे जे यदि पैसा ताठू काढी लिया जाए ताहले बापट को शिफ्ट हो एठी तार जो प्राइस रिलेटिव जो P1 by P2 प्रथम जहाँ थिला वर्तमान से एठी केवल इनकम रो रियल इनकम डिफरेंस पाई से E1 रु E1 डैश को आसी जाउची बुझिले कि तेणु ये जो मूवमेंट है जो इंपैक्ट ये केते पड़ुची ना x1 डैश और x11 ये जो इंपैक्ट है एटा होची ड्यू टू इनकम इफेक्ट प्राइस फॉल करची सेति पय से x1 रु x11 रु x1 डैश को जाउची एटा हला इनकम इफेक्ट अच्छा ताको जति ओरिजिनल इंडिफरेंस करथिला ए बी तमे जो पैसा ताठू किसी काढ़ी आनल न्यू प्राइस रे आनी ताको छाड़ल कोठी ना ए और सी डैश रे ए सी डैश नुआ प्राइस रे जेति की तार परचेजिंग कैपेसिटी शो करूची सेटा होची ए और बी पुराना प्राइस रे जहा थिला से समान रहला से आउ तरे कहू ए बी रो जो परचेजिंग पावर परचेजिंग कैपेसिटी शो करथला इन ओल्ड प्राइस A dash C dash is showing the same purchasing capacity as per the new price. कारण से better of जति के ही थिला तब तो तुम काढ़ी ना से पैसा का तब both are same. Therefore, it is told that A dash C dash is a pivot, P-I-V-O-T, is a pivot of AB. इटा को pivoting कहा जाए ये टेक्निक टा को. So A dash C dash is a pivot of A B. तुम पाइवटिंग कला बेले भी कंज्यूमर को तुम जेते चाहेले पुराना जगह को आनिबो किंतु पुराना बंडल E0 को तुम आनि परलो नाही से रहिला E1 गैस रे ए E0 रु E1 गैस जो माइग्रेशन होची हैला कि सेटा होची सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे जो दुटा पॉइंट देखौची इंपैक्ट केते ना x10 रु x11 सो प्राइस फॉल करबा कारणरू x1 रो x1 demand has increased from x10 to x1 dash. x10 to x1 dash is price effect. Out of that, x10 to x11, this one, is the प्रथम जोटा देखौची corresponding to E0 and E1 dash, that is substitution effect. और x1 dash ru, sorry, x11 to x1 dash, this impact is due to income effect. So substitution effect, first one. Income effect, the second portion, you add these two, whatever you are getting, that is price effect. तो ये इटा गोटे बहुत बड़ा गोटे प्रकार रो कंट्रीब्यूशन हिट्स करो आउ एटा बुझेगला गिफेन पैराडॉक्स जो समस्या थिला जे बुझे होनथला जे कोन पई प्राइस बढ़ले भी डिमांड बढ़ुची गोटे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड कोलैप्स करूची ये बुझे दबो ये कोन बुझेबो ना इथि जदि ए इनकम इफेक्ट एटी दिटा के पॉजिटिव देखौची माने इंपैक्ट पॉजिटिव देखौची डायरेक्शन नेगेटिव ये प्राइस व्हेन प्राइस इज फॉलिंग in consumers money income is real income is rising as a result consumer is increasing demand that is income effect then relative income relative prices remaining the same relative prices माने P1 by P2 बुझियो छी कि रिलेटिव प्राइस अर्थ होची प्राइस रेशियो ताको पुराना जगह को आनिले भी से कोन करछ सस्ता जोटा सेटा को से अधिक करछि महंगा जगह रे let me explain in this way x2 रो प्राइस जहा छ समान अछि x1 रो प्राइस ता कमी गला तनु x2 रो प्राइस समान थिले भी x2 ता x1 तुलना रे रिलेटिवली महंगा आइला कंपैरेटिवली इट इज डियरर जदियो ता प्राइस किसी चेंज हेनी आरटा जेतु सस्ता हे गला ये ता तुलना रे महंगा हे गला तनु कंज्यूमर के रीसप्लिंग करिवो जोटा महंगा ता को लागुची ताकू से टिके कमे दबो आ जोटा सस्ता है
ତା ଜାଗାରେ ସେ ତାକୁ କିଣିବ ଦିଟା ଯାକ commodity ଭିତରେ some sort of substitutability also remains. So consumer is doing some sort of substitution between X1 and X2, increasing consumption of X1 at the by doing some sacrifice of X2. That is the case. This is substitution effect. So substitution effect is always non-positive. Never be positive hapone. Income effect is usually non-positive, but sometimes it can be positive. If it is positive, then it is a tricky matter. कहाँ ପାଇଁ पॉजिटिव होगा ना ଯଦି inferior good ହେଇଥାଏ कंज्यूमर से जिनिस पसंद करूनଥିଲା ତା इनकम जेहेतु बढ़ला आगुर मजबूरन ताको किणुଥିଲା but now consumers income has increased, consumer will leave that commodity. That commodity is inferior. So some commodities are inferior for the consumer. हम समझते हैं किसी किसी जिनिस को बाध्यतामूलक किणुଥାନ୍ତି ଆମର इच्छा ଥାଏ ଆଉ କିଛି बेटर जिनिस ପାଇଁ ଯେମିତି इनकम होगा ताको किणନ୍ତି. Many of you are not using bicycles. That is inferior. The motorcycle टे है ना सेटा तुम पाई हमरा commodity. So तुम income न थियो जदि तुम bicycle manage कर दो तो है गलो point. So this is quite obvious. तो से भलिया यदि ए X1 commodity ता inferior commodity ହେଇଥାନ୍ତା ताले consumer रो purchasing power बढ़ी गले से ताको बढ़ेबनी consumption ताको कमेलो. Price कमिला consumption भी कमिलो. Both are moving in the same direction. That effect is positive. Then income effect will be positive in that case. ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव जदि सी नेगेटिव ये पॉजिटिव ताल कोन गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव दुटा को जोड़ देले कोन एडिशन ता कोन हो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो टेल मी one is positive another is negative, so if you add them together what will happen? That will constant in a point. That is why, how can you say constant? That can be anything. If the positive is stronger than the negative, then the outcome will be positive. If the negative Yes, sir, that stronger, is true. if the negative is stronger than the positive, then the outcome will be negative. So, Yes, sir. income effect or substitution effect যদি sign अलग अलग ହେଇଗଲା ताहले suppose income effect is positive and it is stronger than the substitution effect ताहले दीटा को मिसे देले पॉजिटिव हे जिवो त प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव हे जिवो प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव माने को ना प्राइस कमिले डिमांड कमी जिवो प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़ी जिवो बुझिला कि दीटा जदि प्राइस और डिमांड समान डायरेक्शन में मूव कले then we will say that the effect is positive. ଆମର डिमांड लॉ कहूची कि they are negative ना प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव माने प्राइस बढ़िले डिमांड कमिबो they will move in opposite direction then the effect is negative बुझिले कि तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रे किसी दोष नाही that is always negative बुझिले कि जीरो होई पारे लेकिन पॉजिटिव केबे होबो किंतु इनकम इफेक्ट कैन बी एनीथिंग यदि नॉर्मल गुड अछि ताहले इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव यदि इंफीरियर गुड अछि देन इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव तेणु पॉजिटिव हे गला माने इंफीरियर गुड यदि हे गला ताहले कोन होबा कहि परिबा नाही इफ इट इज ए severely inferior commodity and consumer is spending a significant proportion of her money income on that commodity माने significant proportion करछि माने that is important for the consumer किंतु कंज्यूमर ताको पसंद करू एवला जदि कमोडिटी किसी थाए then there is high chance that that commodity will be a given commodity काहे कि a stronger income effect that is positive income effect which will outweigh the negative substitution effect ultimate effect will be positive that means price and demand will move in the same direction price effect will be positive those goods will be known as given goods so पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होची डिफेंड गुड नहले आ बाकी ऑर्डिनरी कमोडिटी जहां सब हम कंज्यूम करूचंती तार प्राइस इफेक्ट होची नेगेटिव और देन बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स आर नेगेटिव so this is a very important explanation ଆଉ ୟାକୁ ପୁଣି ସ୍ଲଟ୍ସକି मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूचंती एटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ग्रामर रूल ये सब पकई की एटा सब करा जायछि ये होची मैथमेटिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू
substitution effect and income effect. A ultimate equation A आସୁଛି. Okay. And del x1 to del x1. Now not x1, this is p1. Okay. So what about printing mistake? What goes? Okay. So it has p1 is the left side. So this is the price effect. A down first term the substitution effect. Our second term to the minus x1 to del x1 to del m. It has income effect. Minus sign sahita. It has income effect. Substitution effect plus minus of this thing, that is income effect, that is price effect. Okay. Then comes compensated demand curve. तमें एक doubt clearing class में तो सब पढ़े चले भी यदि पूरा how can I cover this? तो किसी न पढ़ी कि एक नो क्लास कले करीब 5टा क्लास से सब पढ़ दो, how is it possible? पढ़ी के ऐसे हो तो डाउट गुड़ा जहाँ अच्छी तब पढ़े अब पढ़िले मो तो क्लास टाइम में पढ़िले मो तो 10टा क्लास खाली यही एटा में दरकार. Here is compensated demand curve और ordinary demand curve. एटा UGC नेट रे एक क्वेश्चन बहुत पड़े और एग्जाम में भी पड़े. What is the difference between compensated demand curve और ordinary demand curve? Ordinary demand curve को हमें Marshallian demand curve भी कहते हैं. Compensated को Hicksian बोल भी कहते हैं. ये जो substitution effect रो जब हमें curve derive करेगा, जो E0 और E1 gas बुझेला ये जो बीटा पॉइंट एटा ऊपर ए डायग्राम रहइबो तळे हमें आ गोटे डायग्राम गोटे बनेबा सेते बळे वर्टिकल एक्सिस पे हमें खाली p1 नबा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एटी x1 আছে सेठी भी से x1 नबा ताले हमें देखिबा ए जो E0 केते बळे हेतला ना प्राइस केते होतला p10 पुणी E1 डैश केतोळे हैला ना प्राइस तो कमी के हेगला P1 डैश तो एठी बीटा पॉइंट हमें तळे डायग्राम रे देखेबा गोटे होची P10 आ गोटे होची P1 डैश ठीक P1 समय रे जति कि तार डिमांड करतला x10 सो P10 x10 ए जगह गोटे हमें पॉइंट गोटे ड्रा करिबा पुणी तार तळे आ जो पॉइंट असला P1 डैश से समय x11 ए पॉइंट को नेकी आ गोटे ड्रा करिबा पॉइंट बीटा पॉइंट को जोड़वा जो कर्व हो that is known as compensated demand curve. In a nutshell, what can I say that from substitution effect when we derive some curve, that curve becomes Hicksian demand curve. On the contrary, the price effect रही price effect कौन होगा ना दीटांगर मूल पॉइंट का समान रहइबो Hicksian और Marshallian दीटांगर किंतु सेकंड पॉइंट टा प्राइस टा कमी गले एठी जो देखो छी E1 गैस सेटा देखो सीधा E1 एक पॉइंट माने x1 गैस रे जो तळे अछि दिस विल बी सो तो सेटा हे गला से हे जो तमरो मार्शलियन डिमांड कर्व बा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व आ एटा अधिक क्वांटिटी जेतु देखो छी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है तो मार्शलियन डिमांड कर्व will be flatter than the Hicksian डिमांड कर्व से जिनसटी एटा एटा जोटा ड्रा करा जाय छी एटा होची Hicksian आ डिमांड कर्व मध्ये लिखा जाय परथांता that would have been flat out के अधिक flatter ही था compensated demand कर्व था so that is another case एठी तर keywords सब दे दिया गला एठी से inferior good to so have a thorough reading कौन सब क्वेश्चंस अछि क्वेश्चन को तुम्हें से अनुसार प्रैक्टिस करियो. Then the final point is derivation of demand. Demand तो पहले से थ्रू डिमांड करती हमें डिराइव करनी पड़ेगा. किसी रिपीटेशन आसी किसी सब एक्सियम गुड़ा जो एक्सियम रो कथा हम कहते मोनोटोनिसिटी व्हाट डज इट मीन मोर इज प्रिफर्ड से सब कथा I try to explain in a simple way for detail जो कोन लोकल नॉन सैटिएटी बोली गोटे कहतली कौन से पॉइंट प्लीज पॉइंट नो है कि वाई पॉइंट दिस इज नॉट प्लीज पॉइंट इन दिस विसिनिटी यार आख पाखरे पाख पाई गोटे सर्कल कर दिया सर्कल भीतर जो गुरा सेटा तार पाख तार भीतर भी किछि पॉइंट मिलबो जोटी से अधिक सैटिस्फैक्शन पाए
ଏଇଟା ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇଛି ଏଟା। ତେଣୁ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି ନାହିଁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବ୍ଲିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିବା। ସେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫିଶନେସ୍ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକାଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ତାର ଇଲାବୋରେସନ୍ ଏଇ କନଭେକ୍ସିଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ତୁମକୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କହିଥିଲି କର୍ଭର ଯେକୌଣସି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯିବ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଦବ, ଯଦି କର୍ଭର ବାକି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତା ତଳେ ରହିଲା ଦେନ୍ କନଭେକ୍ସ, ଯଦି ଉପରେ ରହିଲା ତାହେଲେ କନକେଭ୍। ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ କନକେଭ୍ ହବ ନାହିଁ, କନଭେକ୍ସ ହବ, ବିକଜ averages are preferred to extremes. See, this is that explanation. So why is it lexicographic preference already quasi-concavity? Indifference curve strictly convex to origin the dilla. Utility function will be strictly quasi-concave. So quasi-concavity is a concept of mathematics. तो मित्र जो मैंने mathematics का student थी बहुत से सेटे को भलो कि बुझी जाए पर what is the meaning of quasi-concavity? कौन करी तुम यार बैकग्राउंड किसी जब जानी था तो बुझे सुविधा ही था बट हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्वेंटेड गोटे रेफरेंस खाली दे दूची मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बुक रो गोटे अच्छी सीट साइटर एंड हमोंड मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट नॉट KNUT नॉट सीट साइटर गूगल सर्च कर दो सेकेंड ऑथर पीटर जे हमोंड HAMMOND तार बही गोटे अच्छे से बही क्वासाई कनकेविटी बहुत सुंदर भाव में बुझाई आ गोटे बही होची मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट बाय माइकल हॉय एंड 4 अदर ऑथर्स माइकल हॉय HOY हॉय तो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट हॉय लिखिदेले से बही डिटेल्स तुम्हें पाई जिवो सेतरे ए एक्सप्लेनेशन रहउची व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ क्वासाई कनकेविटी so that is there indifference curve and budget set properties of budget set सेठी इंट्रोडक्टरी थिला तार डिटेल एनालिसिस याडे सब दिया हिची budget line why it should be downward sloping why not horizontal like this explanation is here convex set these are concepts of mathematics convex set this is not a question of economics this is mathematics but this is used to explain the features of indifference curve utility maximization problem this is you will be given one utility function you will also be given the budget line then you maximize utility subject to budget line about budget constraint so the same thing you will first construct the Lagrangian function you कहଥିଲି objective function plus the constraint in 0 form times lambda ei sabla pore then partially differentiate with respect to x with respect to y कोन जगह x1 x2 लिखा हिथिबो कोठी xy लिखा हिथिबो concept is same then with respect to Lagrangian multiplier you will have three equations then you solve them you will find x1 star x2 star by x star y star जहाँ भी तक हो and lambda value this is the same idea this is utility maximization problem which is already explained that this is indifference map this is budget constraint when it is tangential that is giving you the consumer's equilibrium and here you are seeing ये जो डायग्राम रे देखो जो कंज्यूमर जितबे ए प्राइस ता सस्ता है ये चलीछि ए x1 लो प्राइस ए जो बजेट लाइन और फ्लैटर है कि चलिबो प्रथमे ए बी थिला नाउ ए बी डैश तापर ए बी 2 तापर ए बी 3 ए बड़ी भाबरे जते सस्ता है चलछि प्राइस से अनुसार से जाइछि तार इंडिफरेंस तार इक्विलिब्रियम पॉइंट मध्ये सब शिफ्ट हे जान्छ प्रथमे बाम पटे जो डॉट ता देखिछे देन इट इज another point different points now say जो p1 हमें एक x1 लो प्राइस p1 let us take that on the vertical axis फर्स्ट जो प्राइस थिला ओरिजिनल प्राइस p10
So demand was x10. So P10, x10, you are getting this first point, the DD curve first point. When it declined to P1 dash, you are getting another point corresponding to the second equilibrium point. Dot you are getting the second equilibrium point. In the third point, P1 और x1 इसको लेके जो curve हमें बने दिले, this curve is demand curve. ऊपर ये होची continuous equilibrium. It is ceteris paribus, means other things remaining same. ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ new equilibrium points all are due to decline in the price of x1. x2 price has remained the same. ସେଥିପାଇଁ ଏ point A ये किसी shift करनी है जो class 8 है because price of x2 has not changed. Now you are getting successive equilibrium points. So now bring those points to below. ଏଠି x2 ଜାଗାରେ ଆମେ p2 ନେଇଛନ୍ତି sorry p1 ନେଇଛନ୍ତି x1 ର price p1. Then we are getting different prices, different demands. Curve which is joining that, it is demand curve. So demand curve is a derived curve. This is an important observation. The question may come. So that how demand curve is derived from continuous equilibrium points in a difference curve analysis. So ये बड़े बड़े देखिए तो demand curve इसे derive करा जाए. Then demand curve का properties कौन? डिमांड कर्व पर केतटा प्रॉपर्टीज अछि ए सब अंक सब पढ़छ कि नहीं से होची कथा कहबो ऊपर सब उड़ी जिवो डिमांड को व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड कर्व वन प्रॉपर्टी इज दैट इट इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 इट सीम्स टू बी लोडेड टेक्निकली बट ए वेरी सिंपल फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन ए प्रॉपर्टी कोन कंज्यूमर रो जदि मनी इनकम डबल हो जाए और प्राइस सब कमोडिटी डबल हो जाए ताले कंज्यूमर कौन करिवो जो तार इनकम बढ़ी द्विगुणा हो गला किंतु प्राइस सब तमर द्विगुणा हो जाई ताले कंज्यूमर कौन करिवो तीनटा ऑप्शन दउछि पूर्वठार अधिक किनिवो पूर्वठार कम किनिवो ना समान जति किनलो सेति किनिवो यू कैन अंडरस्टैंड इन ए वेरी सिंपल एग्जांपल तमर इनकम 100 टका जिनसर दाम थला गोटी सब जिनस किनलो तार दाम थला 5 टका तुम किनलो 20 यूनिट तमर कैपेसिटी थला किनिया वर्तमान सपोज तुम इनकम 200 हो गला तार प्राइस भी डबल हो गला तो कैन यू बाय माने तुम 200 है ता दाम भी 10 टका हो गई सो यू आल्सो बाय द सेम अमाउंट 20 सेटा जदि मल्टी कमोडिटी केस रे भी शेयर हुए देन दैट विल आल्सो हैपन प्रथम कंज्यूमर जति क्यूट लबत मनी इनकम व्हाट आर द प्राइस सेट p1 p2 जते कमोडिटी से होची समस्त प्राइस जहां सब गुडा जति डबल हो गला इनकम डबल हेले भी जहाँ किंतु नहीं करेगा तो यदि किसी चेंज न कला then it is known as it is homogeneous of degree 0 so that is a property of the demand curve our demand curve it is downward sloping that is also a property del x1 to del p1 is always negative here माने it will never be positive always negative कहबा ठीक होबो कारण 0 is also a possibility but it will never rise. Jadi rise kala that is a different case. Demand law of variation. So that is also a property. Demand curves are downward sloping. Second to that it is homogeneous of degree 0. It like I said, first it is Walrasian. This is Marshallian Walrasian demand curve. That is also known as ordinary demand curve. So demand functions are homogeneous of degree 0. यार अर्थ होची से सब प्राइस वन इनकम यदि समान मल्टीपल ले राइज करि जिबे देन डिमांड विल नॉट चेंज ओके then another concept is known as indirect utility function এটা কোন direct utility function the utility is a function of x1 x2 that is direct utility function but once say x1 x2 जदि तमे फाइंड आउट करि देलो तमे से जो utility maximization problem को solve करि सला ପରେ then suppose you found that this much of x1 is to be purchased and that much of x2 is to be purchased and you could solve the problem तमे जहां पाइबो से जो नुआ डिमांड ता that suppose that is a demand function that must be a function of the prices and money income of the consumer तो सेटा को नहीं कि ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देने जहां पाइबो दैट विल बी नोन एज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन
You see here, is it visible to you, the highlighted portion? जोटा मु हाइलाइट करले सेटा तुम जानि पड़छो। हाँ सर। U is a function of x y, that is utility function, direct utility. x को तुम सॉल्व कर दो, तुम x को सॉल्व करके पाइबो x as a function of p1 p2 n हैला। ए जोटा पाउचो एटा होची मार्शलियन डिमांड। तुम देखो जोठी या पूर्वरु कोनसी गोटे एग्जांपल थिला, एठी जो अछि एठी से सॉल्व करिछि, सॉल्व कला परे वो x पाइबो, गोटे डिमांड इक्वेशन पाइबो ए लेखाई like this one 2.10. तो फाइनली को सॉल्व कर दो जो इक्वेशन गुडा को तुम पाइबो x is a function of p1 p2 and n. Similarly y is a function of p1 p2 n. Y star is y star of p1 into n. तामाने y also depends upon prices and money income. ये जो पाउचो जो दीटा इक्वेशन ए दीटा होची डिमांड इक्वेशन। ये जो डिमांड इक्वेशन एटा होची मार्शलियन डिमांड इक्वेशन, डिमांड फंक्शन। Okay, Marshallian demand function, also known as Walrasian demand function, also known as ordinary demand function. ये फंक्शन को नहीं कि x जगह रे ए तार फंक्शनल फॉर्म टाको रिप्लेस कर दो, y जगह रे तार फंक्शनल फॉर्म को रिप्लेस कर दो, what you are finding that is known as indirect utility function. You see here, in the place of x we have replaced its functional form, in the place of y we have replaced its functional form. The money utility will now be expressed not in terms of x and y but in terms of p1, p2 and n. Expressing utility in terms of prices and money income, okay, so that gives you indirect utility function. Kind indirect kya hochi? The demand depends upon commodities, commodities depends upon prices and money income, then indirectly utility also depends upon prices and money. सेटପାଇଁ ताको कहलवा indirect utility function. Okay, indirectly utility is a function of prices and money income. That is indirect utility function. It has also some properties. Okay, so that you can see here. You can refer some good books if you are good students and you want to do good in economics. So तमे किसी भलो बही चाह दिया जे otherwise it's okay. Presentable आउ किसी भलो बही भी तमे पढ़ी परिबो. So this is regarding so if you have some questions, tomorrow I will have class in the same time. तमे ताको very beginning रे मते पचरे दो, तो हम तुमको चांस दोची जे क्वेश्चन डाउट अछि पचारो से समय चुप बसचो या न करी ताको करी. अब गोटे होची एक्सपेंडिचर फंक्शन. एक्सपेंडिचर फंक्शन कोन ना जेमति हमें मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू गिवन मनी इनकम, ये कंज्यूमर गोटे प्रॉब्लम से बोले तार आ गोटे प्रॉब्लम हे किबो जदि तार पाखरे किछि पैसा खर्च करबे को अछि किंतु से खर्च रे मिनिमम किछि यूटिलिटी भी तार पाइबार अछि किंतु खर्च से मिनिमाइज कर. दैट मींस मिनिमाइज गोटे कंज्यूमर प्रॉब्लम वर्तमान मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हे गला. बट दैट the minimize the expenditure subject to the condition that you get a minimum level of utility. तबे नॉन लाइन कंज्यूमर को कर जमा किसी खर्च करिवो यूटिलिटी किसी पाइबो नाही तो हम पूरा मिनिमाइज कर देली जीरो ले. That doesn't have any sense. It will have sense provided the consumer gets some money or some utility at least. तो ताको को चैलेंज दे जेबो कि एते की यूटिलिटी पाइबो तमे केते कम खर्च में ताको पाइ परछु कर. से जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देला परे तार एक्सपेंडिचर ता कोन एक्सपेंडिचर इक्वेशन इज दिस वन p1x + p2y. सब्जेक्ट में कांस्टेंट बदली गला. आगे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करला सेटा चॉइस फंक्शन थिला, वर्तमान सेटा तार कांस्टेंट हे गला. ओके, सब्जेक्ट टू गिवन यूटिलिटी. व्हाट इज द गिवन यूटिलिटी? u bar. U bar is still written here. Minimum जो greater than equal means at least the minimum u bar utility पाइबार अछि ताकू किंतु खर्च पर केते कम खर्च रे पाइ. दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. याकू भी से लाग्रांजियन फंक्शन लेकी दिस इज द चॉइस फंक्शन p1x + p2y. दिस इज written here, you see, plus this in zero form.
এই বাপটটাକୁ ଡାହାଣକୁ ନେଇଗଲେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ରହିବ 0 0 ପରକୁ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଏଠି ମ୍ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ଦେନ୍ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜିଆନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବ ସୋ ଡେଲ୍ L to del x is equal to 0 del L to del p del y is equal to 0 del L to del mu is equal to 0 three different equations you get here three different equations three unknowns x y and mu these are unknowns ये तीनटा इक्वेशन ହେଇଗଲା तीनटा unknown ହେଇଗଲା सब कर दो जहां पाइला that is known as Hicksian demand function जो x star y star जोटा वर्तमान पाइला ये फंक्शन को that is known as compensated demand function or Hicksian demand function সেই फंक्शन को पूर्ण लेके ये जो p1x x जगह रे से जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ x को यदि हम रिप्लेस कर दबा y जगह रे फंक्शनल फॉर्म ऑफ y को रिप्लेस कर दबा that function will be known as expenditure function so indirect utility function is derived from utility maximization problem expenditure function is derived from expenditure minimization problem ଏଠି କରିକି ତାକୁ କରାଯିବ and it has its own properties ତେଣୁ ସେପଟରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି ଫଙ୍କସନରେ ଗୋଟେ ଥିବ ରଏସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥିବ ସିମ୍ପଲ୍ସ ଲେବଲ୍ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କିନି ପଢ଼ ଆଉ ପଢ଼ିକି ତା ଭିତରେ so my sincere suggestion is that this is the introductory class ଏବେ ତମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥିଲ but ତମେ ପଢ଼ିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନେଇକି ଯଦି ଆସିଯିବ then that will serve better purpose ତମର ଅଧିକ କିଛି ତା ଭିତରୁ ତମେ ତାକୁ ଟେକ୍ କରିପାରିବ otherwise ऐसे पर्सनल ଆସିଗଲା ଏଠି so these are the mathematical properties I can explain you but it needs some time decomposition of a prices this is price effect you already substitution effect income effect I have already told you price effect is equal to income effect plus substitution effect question normally comes so some impose the ordinary demand function or compensated demand function one is this is Marshallian this is compensated is Hicksian you can call this is Marshallian demand function by Wallacean demand function is platter you see this is platter okay से तमने कुछ चित्र करके देखे दे पारियो मैथमेटिक्स विशेष किसी दरकार नहीं यहाँ पे but if you can do mathematics that is always welcome then duality relation होची from Marshallian demand function you can always find the Hicksian demand function and the vice versa is also true so there exists a duality between Marshallian and Hicksian demand function another thing is that from indirect utility function you can always find the expenditure function and the vice versa गोटे दिया हले तुम आलका फाइंड आउट करते परिबो बस सेटा दिएते एटा को फाइंड आउट कर परिबो सेटा से पे कोजे डुअलिटी दैट मींस गोटे को आ गोटे हमें डिराइव कर दे पाइबा स्लट्स की इक्वेशन या परे भी और के पाठ आरंभ हो गला जोटा होची हमर विविड प्रेफरेंस थ्योरी सेटा बोधे रिसेंट डेवलपमेंट को लिखी एटा होची unremoved surplus linear expenditure system all these okay so it is time to stop in online class remaining more than 2 hours is extremely difficult so I suggest that you read this if you have some doubt I can devote maximum 15 minutes tomorrow to attend to your doubts of this block 1 and tomorrow I am assigned to explain block 2 so we'll stop here any question from your side which will be discussed tomorrow. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. See you tomorrow, right? Thank you.
तो सर लास्ट का क्लास में हम जो अभी पढ़े वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन लेके। तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे वही। कल के रिमेंबर फॉर टुमारो वी हैव ब्लॉक 2 नेक्स्ट ब्लॉक पढ़ने के लिए है। क्योंकि 5 क्लास में मैंने 5 दिन में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक खत्म होगा। तो उसको देख लेंगे कितना क्या है, बट यू कम विथ क्वेश्चंस। Okay, I'll try to attend to some of the questions, some Okay, so important I questions. don't have any idea that this is a doubt clear class, so I thought it's a ମାନେ ଏଟା ବାସ୍ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲିବେ ତ ଏଟା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଥିଲାନି। ଠିକ Actually, ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୁ ପଢା ଯିବ। ଏଟା ତମର ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ ନା ଏଟା, ତ ଆଜ୍ଞା ନଟ୍ ଇନ୍ ରେଗୁଲାର ମୋଡ୍ ଭିତରେ ବସିକି କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଆଗରେ ବସିକି କରିବ, ସେମିତି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିବର୍ଟି। तुमको स्टडी मटेरियल आगे सप्लाई करा है, सो यू विल गो ଆଜ୍ଞା थ्रू द मटेरियल्स। ता भितर तुम नोट करथो जो जगह तुम कॉन्सेप्चुअल माने डाउट आसुथो से गुडी को एठी आनिकी करा जाय पारिबो। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन बी डन। अदरवाइज आई ट्राइड टू बी फास्ट till it was not possible on my part to cover the entire block, बुझिले कि yeah that's true. So from your side, some cooperation is needed that you come with particular questions and at the very beginning you raise those questions. ଯେତେବେଳେ ମୋର explanation ଚାଲିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ point କୁ ବେଶୀ stress ଦେଇକି ଆଉ ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। So ଆଜ୍ଞା that will be the best thing, right? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। Okay, see you. I'm still in my office because of you. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you. Good night from my Thank you. side. Okay. Sir. Good night sir. ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ଅଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ।